मवि सदा राम रस बीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। मवि सदा राम रस बीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। हाँ अष्ट कमल दल छवका चाले पांच तत्व गुण चीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। हाँ अष्ट कमल दल छवका चाले पांच तत्व गुण वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। कर्म की पूर्णी कांतन बैठी कर्म की पूर्णी कांतन बैठी या कुकवी सवित महीनी व चादर झीनी रंग झीनी हो जी। मावी सदा राम रस बीनी व चादर झीनी रंग झीनी हो जी। या चादर धोबी के दीनी शब्द ताल धर दीनी चादर झीनी या सवक शिला पर पकड़ पछाटी सवक शिला पर पकड़ पछाटी या इन वधु उजली कीनी व चादर झीनी रंग झीनी हो जी। मैं भी सदा राम बीनी म चादर झीनी रंग झीनी हो जी। या चादर सब नर मुनि ओढ़ी ओढ़ के मैली कीनी व चादर झीनी रंग झीनी हो जी। या चादर सब नर मुनि ओढ़ी ओढ़ के मैली कीनी चादर झीनी रंग झीनी हो जी। अर्जुन ओढ़ मरम नहीं जाना अर्जुन ओढ़ मरम नहीं जाना या इन मधु उजली कीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। मैं भी सदा राम रस बीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। आजू ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव ने विमल कीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। आजू ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव ने विमल कीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। हाँ साहेब कबीर ने युगत से ओढ़ी साहेब कबीर ने युगत से ओढ़ी या चुमकी त्यों धर दीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। मैं भी सदा राम रस बीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। मैं भी सदा राम रस बीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी रंग झीनी हो जी रंग झीनी हो जी। इनका भेद के माही जहाँ देखूँ तू का तू इनका भेद बता मैं व्यवधू अच्छी करनी कर ले तू छाड़ी फूल जगत में माही जहाँ देखूँ तू का तू। हाथी में हाथी मन बैठो चिंटी में है छोटो तू हो या महावत ऊपर बैठा वे हंकने वाला तू का तू। हाथी में हाथी मन बैठो चिंटी में है छोटो तू हो या महावत ऊपर बैठा वे हंकने वाला तू का तू हो या महावत ऊपर बैठा वे हंकने वाला तू का तू। चोरों के संग चोर बन जावे डाकू में है भेलो तू चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू का तू चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू का तू। दाता के संग दाता बन जावे भिखारी में भेलो तू मंगतो होकर मांगने लागे वे देने वाला तू का तू मंगतो होकर मांगने लागे वे देने वाला तू का तू। नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में दिसे बालक होकर रोवन लागे वे राखण वाला तू का तू बालक होकर रोवन लागे वे राखण वाला तू का तू। जल तल झील में तो ही विराजे जहाँ देखूँ तू का तू कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है जू का तू कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है जू का तू कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है जू का तू। Last song, Kabir ji talks about seeing him in everything, whether it's elephant, the hugeness of the elephant, tininess of the ant, and the person sitting on the elephant also is he. So he is talking about find this secret within so that you can see him everywhere, which
both Swamijis have been talking about last few days. So Kabir ji also says the same thing, and at last he says, as you are, your Guru will make you meet him as is. Nothing else to be done. इसका पहला जो है सब घट मोरा साइया. In everybody, सब घट मोरा साइया. In every body is my master. Suni sage na koi. There's no pot or no body which does not have the divine. Balihari un ghat ki. But we are lucky to see some great souls, so we are all ever grateful to them for this. He's coming in that form and telling us the Lord is within you. Balihari un ghat ki. Ja ghat paragat hoy. Wherever he is seen explicitly, we are. हाँ पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी. हाँ पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी. झड़ी लगी हाँ झड़ी लगी. झड़ी लगी हाँ झड़ी लगी. पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी. हाँ पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी. बूंद का प्यासा गढ़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद न आया. बूंद का प्यासा गढ़ा भर पाया, सपने
जय राम जय जय राम Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram
Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri 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 Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Shri Ram, Ram, Rameti, Rame, Rame, Manorame, Sahasranama Tattulyam, Ramanama Varanane. Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Today we would like to sing in praise of Lord Rama, a great composer, Mysore Vasudevachar. He says, Broche Varevurura, Ninuvina. Other than you, there is nobody to protect me. This we say to all our gurus, because this particular satsang only a guru can plan and execute so beautifully. The satsang is such a boon for all of us during such days when we are with the God, when we smaranam, shravanam, everything is in praise of the Lord. The process of understanding ourselves starts from here. How much we understand it depends upon all of us, but at least our Guru is able to give us an opportunity to realize the ultimate being in this universe. Thank you, Guruji. Ninnu vina Raghuvara Broche Varevurura Broche Varevurura Rama Rama Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha Sitaya Pataye Namaha. O Chatura Nana Divanditani Kupara Kelanaya. O Chaturanali Vanditani Kupara Kelanaya. O Chatura Nana Divanditani Kupara Kelanaya. O Chaturanali Vanditani Kupara Kelanaya. Charidamu Pogadalenu na Chinta Tirchi Varamu Nichi Vegame Ni charidamu pogadale
తీర్చి వరములీర్చి వేగమే నీ చరితము పొగడలేను నా చింత తీర్చి బలము నీచి వేగమే నీ చరితము పొగడలేను నా చింత తీర్చి వరము నీచి వేగమే బ్రోచేవార్ ఎవరురా నిన్ను వినా రఘువరా బ్రోచేవార్ ఎవరురా నిన్ను వినా రఘువరా నన్ను బ్రోచేవార్ ఎవరురా నిన్ను వినా రఘువర నన్ను బ్రోచేవార్ ఎవరురా నిన్ను వినా రఘువరా నీ చరణాంబుజమును నే నీ చరణ అంబుజమును నీ చరణ అంబుజమును నే నీ చరణ అంబుజమును విడజాల కరుణాల వాల బ్రోచేవా రెవరురా నిన్ను వినా రఘువరా నీ చరణ అంబుజమును నే విడజాల కరుణాల వాల బ్రోచేవా రెవరురా ఓ చతుర నానాదివందిత నీకు పరా కేలనయ్యా ఓ చతుర చతురాననాది వందిత నీకు పరా కేలనయ్యా ఓ చతుర నానాదివందిత నీకు పరా కేలనయ్యా ఓ చతురాననాది వందిత నీకు పరా కేలనయ్యా నీ చరితము పొగడలేను నా చింత తీర్చి వరములిచి వేగమే నీ చరితము పొగడలేను నాదింద తీర్చి వరములీర్చి వేగమే సా సానిద బదని సని నిద పమ బదమ గమ పదని సనిద పమ నిద పమ గమ పద మగరి సమాగమ పదమ పదని ససరి ని సదా దదని పదమ పద సానిద పమ గమ నిదని పదమ పదని సమాగరి సరి సా నిద పస నిద పమ గమ పదని సనిద పదని సని నిద పమ పదమ గమ పద నిజ నిద పమ నిద పమ గమ పద మగరి గమ గమ పదమ పదని సరి ని సద జదని పదమ పదని సనిద పమ గమ నిదని పదమ పదని సమాగరి సరి స నిద పస నిద పమ గమ పదని బ్రోచేవా ఎవరురా నిన్ను వినా రఘువరా సీతాపతే నాపై నీకభిమానము లేదా సీతాపదే నాపై నీకభిమానము లేదా సీతాపతే నాపై నీకభిమానము లేదా సీతాపదే నాపై నీకభిమానము
వాతాత్మజ అర్చిత పాదన మొరలను వినరాద మొరలను వినరాద నా మొరలను వినరాద వాతాత్మజర్చిత పాద నా మొరలను వినరాద వాతాత్మజ అర్చిత పాద నా మొరలను వినరాద ఆతురముఖ కరిరాజుని 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 బ్రోచిన ఆతురముఖ కరిరాజుని బ్రోచిన వాసుదేవుడే నీవు గదా 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 నా పాదగములను పోగొట్టి గట్టిన నా చెయ్యి పట్టి విడువగా నిన్ను నా పాదగములను పోగొట్టి గట్టిన చెయ్యి పట్టి విడువగా సనిద పదని సని నిద పమ పదమ గమ పదని సని పమని పమ గమ పద మగరి సమగమ పదమ పదని సరి ని సదా గదని పదమ పదని సాని దప మగమ నిదని పదమ పదని సమగరి రి సా ని దప స ని దప మగ పదని సని ద పదని సని ని ద పమ పద మగ మ పదని సని ద పమ ని ద పమ గమ పద మగరి సమ గమ పద మ పదని సరి ని సద గదని పమ పదని సని ద పమ గమ ని దని పద మ పదని స మగరి సరి స ని ద పద ని ద పమ గ పదని బ్రోచేవా ఎవరురా నిన్ను వినా రఘువరా నీ చరణాంబుజమును నే విడజాల కరుణాల బాల బ్రోచేవా ఎవరురా నిన్ను వినా రఘువరా Acharya Mysore Vasudevacharya, the composer of this composition, says, నా పాదగం ముల పోగోడి గట్టిగా నా చేపట్టి విడువగా. நாம் பண்ணின பாதகம்லாம் போகிறதுக்கு, என்னோட பழைய வினைகள்லாம் மாறுறதுக்கு நான் செய்பட்டி விடுவக. ஓ சதுரா நன்னாதி வந்தித்த நீ கூப்பரா கேளுக, என் மேல என்ன இந்த பாராமுகம் உனக்கு? ஓ சதுரா நன்னாதி வந்தித்த, சதுரார்களான பெரிய 30 முக்கோடி தேவதைகள்லாம் வணங்கக்கூடிய சதுரனா இருக்கக்கூடிய நீ, உனக்கு என் மேல என்ன பாராமுகம்? ஓ சதுரா நனாதி வந்தித்த நீக்கு பராகேலனய்யா,
నీ చరితము పొగడలేని నా చింత తీర్చి உன்னோட சரித்திரத்தை பேசுறதுக்கும் உன்னோட சரித்திரத்தை பற்றி நினைக்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே உன்னோட அருள் இருந்தால் தான் என்னால் முடியும்ப்பா. புரோச்சே வாரெவருரா, உன்னை விட்டா என்னை காப்பாத்துறதுக்கு யார் இருக்கா? நினுவினா ரகுவரா, உன்னை விட்டா ரகுவரா 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 ராமா, உன்னை விட்டா புரோச்சே வாரெவருரா, என்னை காப்பாத்துறதுக்கு யார் இருக்கா? சீதா பத்தே நாப்பை உனக்கு அபிமானம் இல்லையாப்பா? அந்த சீதையை நீ அத்தனை பேர் அங்கே கான்டெஸ்டில் நிற்கிறா, அந்த சிவதனுஷை முறிச்சு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவளுக்கு அருள் பண்ணி நீ அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு அருள் பண்ணலையா? சீதாபதே, அவளுக்கு அருள் பண்ணின உனக்கு என் மேலே தய இல்லையா? சீதாபதே நாப்பை நீக்கு அபிமானமும் லேதா? வாதாத்மஜார்ச்சித. இதில் பெரிய கம்போசர்ஸ் எல்லாம் பாட்டு உங்களுக்கு மறந்து போயிட்டா கூட அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த த்விஜாட்சர பிராசம்ங்கிற ஒரு இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால இவர் எனக்கு சொல்லி தான் எனக்கு அது தெரியும், எங்கள் ஆத்துக்காரர் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் அதை பற்றி. சீதாபத்தே நான் சரி ஒருவேளை பை சான்ஸ் செகண்ட் லைன் மறந்து போயிடுத்துனா உடனே வாத்தாத்மஜ செகண்ட் த்விஜாட்சரம். சீதாபத்தே வாத்தா, ரெண்டு பேரும் அப்படி ஒரு பக்திமான்கள், ராமரோட அவ்வளோ பெரிய பக்திமான்கள். சீதையை பற்றி சொல்லிட்டு உடனே வாத்தாத்மஜ அர்ச்சித்த பாத, அனுமனால பூஜை பண்ணப்பட்ட பாதன் உடையவனே. வாத்தாத்மஜார்ச்சித பாத நான் முரலனும் வினராதா, நான் என்னோட முறை உனக்கு கேட்கலையா? ஆதுரமுக, ரொம்ப ஆதுரமா ரொம்ப மாதுரியமா ஆதுரமுக கரிராஜுனி, ரொம்ப அவலத்தோட அந்த கரிராஜன் கத்தின போது, ஆதி மூலமேன்னு கத்தின போது நீ அந்த வாசுதேவனா அவர் அந்த கரிராஜனுக்கு அருள் பண்ணலையா? ஆதுரமுக கரிராஜுனி புரோச்சின வாசுதேவுடைய நீவு கதா, நீ தானே அந்த வாசுதேவனா இருந்த அந்த கரிராஜனை காப்பாத்தின. நான் பாதகம் மெல்ல போகோடி கட்டிக நான் செய்ப்பட்டி விடுவக, என்னோட பாதகம்லாம் போய் என்னோட வினையெல்லாம் ஒரேடியா வரையற அறுத்து என்னை காப்பாத்துறதுக்கு புரோச்சே வாரெவருரா, ஒன்று தவிர வேற யாருப்பா இருக்காராமா அப்படின்னு மைசூர் வாசுதேவாச்சாருடைய காம்போசிஷன். ராம். हे दयालुव, हे कृपालुव, रामा रामा हे दयालुव, हे कृपालुव, हे दयालुव, हे कृपालुव, रामा हे दयालुव, हे कृपालुव, रामा हे दयालुव, हे कृपालुव.
स्वामी राघव हे दयाळुव स्वामी राघव हे दयाळुव स्वामी राघव हे दयाळुव राम स्वामी राघव हे दयाळुव राम स्वामी राघव हे दयाळुव हे कृपाळुव राम हे दयाळुव हे कृपाळुव हे दयाळुव राम स्वामी राघव हे दयाळुव राम स्वामी राघव स्वामी राघव स्वामी राघव प्रथम कामल लाविली सवे प्रथम कामना लाविली सवे प्रथम कामला लाविली सवे प्रथम कामला लाविली सवे मग उपेक्षिता मग उपेक्षिता ओ मग उपेक्षिता मग उपेक्षिता योग्यता नवे दयाळुवा मग उपेक्षिता योग्यता नवे दयाळुवा प्रथम कामला लाविली सवे मग उपेक्षिता योग्यता नवे என்னோட முதல்ல என்னோட கர்மம் என்னது? தயவானான உன்னோட பெயரை சொல்றது, உன்னை ஸ்மரிக்கிறது, உன்னோட நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது. பிரதம காம் மலா லாவிலி சவே மக உபேட்சிதா யோகியதா நவே. உனக்கு என்ன உபேக்ஷம் பண்றதுக்கு எப்படி ஒரு மனசு வந்தது? உன்னுடைய நாமஸ்மரணையாவும் உன்னையே மனசுல தரிச்சுட்டு இருக்கிறவனான என்ன உபேக்ஷம் பண்றதுக்கு, என்ன நிர்தாட்சண்யமா என்ன உபேக்ஷம் பண்றதுக்கு உனக்கு எப்படி மனசு வந்தது? அதுக்கு கூட யோகியம் இல்லையானா? அதுக்கு கூட மக உபேக்ஷிதா மக உபேக்ஷிதா யோக்யதா நவே दयाळुवा हे कृपाळुवा रामा हे दयाळुवा स्वामी राघवा हे दयाळुवा सकळ जाणसी माझा अंतरस्थिती सकळ जानसी माझा अंतरस्थिती तू
सकळ जाणसी माझा अंतर स्थिती तू सकळ जानसी माझा अंतरस्थिती मग तुझा प्रती मग तुझा प्रती मग तुझा प्रती मग तुझा प्रती काय विनंती काय विनंती काय विनंती काय विनंती நான் என்ன அப்பீல் பண்ண முடியும்? How can I appeal to you? मग तुझा प्रती काय विनंती सकळ जानसी माझा अंतरस्थिती. You know me. You know my antarasthiti. You know my desires. You know my bhakti. You know my vasanas. You know all the good things and bad things about me. What is there for me to appeal to you, O Rama? Mag tuza prati kaya vinanti. मग तुझा प्रती काय विनंती दास मी तुझं वाट पाहतो. As a devotee, as a slave of you, I wait for your arrival, just like Shabari. वाट पाहतो. बोलता नये कंठ ताटतो. I get choked. I can't speak. Thinking of your beautiful form, beautiful protective measures that you have taken for all the devotees. I can't speak. मग तुझा प्रती काय विनंती मग तुझा प्रती काय विनंती दास मी तुझं वाट पाहतो. दास मी तुझं वाट पाहतो. ओ दास मी तुझं वाट पाहतो. दास मी तुझं वाट पाहतो. बोलता नये बोलता नये बोलता नये बोलता नये कंठ ताठतो हे दयाळुआ. बोलता नये बोलता नये कंठ ताटतो हे दयाळुआ. रामा हे कृपाळुआ हे दयाळुआ. रामा स्वामी राघवा हे दयाळुआ. रामा हे दयाळुआ. रामा हे दयाळुआ. All this was instilled in our minds by another great Guruji whom we call Sri Haridas Giri, who had instilled in our minds the beauty of abhangs apart from the normal Tamil kirtanams. We always stand indebted to such great Mahans who have brought Nama Sankirtanam to a level where
it is equally being enjoyed by all the Pamaras and Pandits to bring out the beauty of the great composers. Music as such is beautiful with ragas, alapanas and everything. But without words, without sahitya, there is no Sangeeta. So we are indebted to all the composers, Vagyakaras, and great sons who have written Ashtakams, Sahasranamams, Kritis, to bring out the beauty of the Lord. Now we conclude with a bhajan of again the same Guruji whom we have been idolizing for Nama Sankirtanam, one of his greatest Namavalis. Sadguru Kripa Barisat Barisat Sadguru Kripa Barisat 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 Oh Barisat 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 Oh Barisat 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 Oh Barisat 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 Sadguru Kripa Barisat Barisat Sadguru Kripa Barisat Barisat Sadguru Kripa Barisat Barisat Sadguru Kripa पियो पियो प्यारे मन निषिधि निसार पियो पियो प्यारे मन निषेध निसार पियो पियो प्यारे मन निषिधि निसार पियो पियो प्यारे मन निषेध निसार ओ बरसत बरसत सद्गुरु कृपा बरसत बरसत सद्गुरु कृपा बरसत बरसत सद्गुरु कृपा बरसत बरसत सद्गुरु कृपा पियो पियो प्यारे मन निषिधि निसार पियो पियो प्यारे मन निषेध निसार ओ पियो पियो प्यारे मन निषिधि निसार पियो पियो प्यारे मन निषेध निसार आनंद 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 ही मेरा आनंद 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 ही मेरा ब्रह्मानंद परमानंद आनंद ही मेरा ब्रह्मानंद परमानंद आनंद ही मेरा ओ 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 आनंद 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 ही मेरा आनंद 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 ही मेरा नाचो गाओ नाचो गाओ ओ नाचो गाओ अरणा मीरा सद्गुरु नाथा नाचो गाओ ओ नाचो गाओ ओ नाचो गाओ राधा कृष्णा अरणा मीरा ओ नाचो गाओ राधा कृष्णा अरणा मीरा ओ नाचो गाओ राधा कृष्णा अरणा मीरा ओ नाचो गाओ सद्गुरुनाथा अरणा मीरा ओ नाचो गाओ सद्गुरुनाथ अरणा मीरा ओ बरसत 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 बरसत
बरसत बरसत बरसत बरसत बरसत बरसत बरसत ओ बरसत 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 ओ बरसत 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 ओ बरसत 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 ओ बरसत 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 सद्गुरु कृपा ओ बरसत बरसत सद्गुरु कृपा पियो पियो प्यारे मन निशिति निसार पियो पियो प्यारे मन निषेध निसार आनंद 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 ही मेरा आनंद 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 ही मेरा आनंद 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 ही मेरा ओ आनंद 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 ही मेरा नाचो गावो सद्गुरुनाथ अरणा मीरा नाचो गाओ सद्गुरुनाथ हरणा मीरा ओ नाचो गावो सद्गुरुनाथ अरणा मीरा ओ नाचो गाओ सद्गुरुनाथ हरणा मीरा सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु ओ सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु ओ सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु ओ सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु ओ सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु ओ सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु ओ सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु ओ सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु ओ सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु ओ सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु जय जय सद्गुरु ओ बरसत बरसत सद्गुरु कृपा बरसत बरसत सद्गुरु कृपा बरसत 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 सद्गुरु कृपा बरसत 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 सद्गुरु कृपा पीवो पीवो प्यारे मन निशिति निसार पियो पियो प्यारे मन निषिधि ओ निसार आनंद 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 ही मेरा ओ आनंद 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 ही मेरा 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 ओ आनंद 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 ही मेरा 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 ब्रह्मानंद 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 ही मेरा ब्रह्मानंद 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 ही मेरा ओ आनंद 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 ही मेरा आनंद 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 ही मेरा नाचो गावो सद्गुरुनाथ रणा मीरा नाचो गाओ सद्गुरुनाथ हरणा मीरा ओहो नाचो गावो सद्गुरुनाथ रणा मीरा ओ नाचो गाओ सद्गुरुनाथ हरणा मीरा नाचो गावो सद्गुरुनाथ रणा मीरा ओ नाचो गाओ सद्गुरुनाथ हरणा मीरा बरसत बरसत सद्गुरु कृपा बरसत बरसत सद्गुरु कृपा पीवो पीवो प्यारे मन निशिति निसार पियो पियो प्यारे मन निषिधि निसार बरसत 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 Let us all pray. Let Guruji's blessings shower on all of us on all 365 days 24/7. Hari Om.
Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Right from the first chapter of In Quest of God, Papa has been bringing these themes, our surrender to Him. Papa's approach is not a dry philosophy. It is interspersed with bhakti. At every chapter he will find, whatever may be the circumstances he was made to go through, he would find the mercy, he will say, I don't deserve anything. Today, he chose Murtiji and party to bring out inspiring bhajans to give thrust to the surrender aspect, to know our limitations, and also about the omnipotent nature of the indwelling and all-pervading reality. We may fail, we may forget. As soon as the program is over, our me and mine will come and take hold of us. But still, when he provides the opportunity for us to dwell on these aspects, that only he is there, who is there, whether it is Brocheva, whether it is the next one or the next one, through all these, God is trying to impress upon the subservience to his power, so that the dominance of me and mine will get lesser and lesser and lesser. That is the main theme of In Quest of God, and it is so befitting that spontaneously he gave the prompting to bring out these such wonderful bhajans. We are deeply grateful to him, and also to his chosen instruments. Every day we have been blessed with some words of wisdom by Mahatmas. Today we will hear about Sri Muralidhar Swami, a very great saint in Chennai, very unassuming, but totally committed to Nama. Let us have the privilege of hearing his words, and then we will move to the next. Madhurapuri Ashram. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sadgurunatha Maharaj ki jai. Kashaya Dandakarakadi Vibhushitanka. Vairagya Bhagya Jarate Karunanite Tvam. Samsara Kupapatitasya Samakulasya Bodhendra Deva Mamadehi Karabalampam. சாதாரண ஒரு மனிதர்களுக்கு இந்த உலகம் சத்தியம் அப்படின்னு தோணும். அதை பத்தி ஒரு விசாரமே வராது. Subtitle? சத்தியம்ங்கிற நிலையில இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கையில சில சமயம் நமக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கிறது, அந்த பொருள் நம்ம விட்டு நழுவி போறது. நம்ம இளமையா இருக்கும், அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வயோதிகம் வருது. நம்முடன் இருக்கிறவர்கள் நம்ம விட்டு பிரிஞ்சு போறா. இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த உலக வாழ்க்கை அனித்யம் அப்படின்னு தோணும். முதல்ல சத்தியம்னு தோணித்து, அப்புறம் உலக வாழ்க்கை உலகம்ங்கிறது அனித்யம் அப்படின்னு தோணும். அனித்யம்னு தோணிட்டு வயதாக உலகத்துல எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு, நம்மளால அதெல்லாம் அனுபவிக்கிற ஒரு சக்தி நம்ம கிட்ட இந்திரியங்கள்லயும் இல்லை, அறிவுலையும் இல்லை, சரீரத்திலையும் இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த உலகம் அசாரம் அப்படின்னு தோணும். இதுல சாரமே இல்லையே, இதுல ஒண்ணு எசன்ஸ் இல்லையே அந்த லைஃப்ல அப்படின்னு தோணும். அதுக்கப்புறம் பலவிதமான துக்கங்கள் நமக்கும் வருது, பிறர் அந்த துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதையும் பார்க்கிறோம்.
அப்படி பார்க்கும் பொழுது அடுத்துதான் இவனுக்கு என்ன தோணும்னா, இந்த உலகம் துக்கமயமானது அப்படின்னு தோணும். உலகம் துக்கமயமானது அப்படின்னு அப்படியே விசாரம் பண்ணினானால் இந்த ஜெகத் மித்யை அப்படின்னு தோணும். இது ஒரு கிரமம். இந்த உலகமே இல்லை போல இருக்கே, நாம தூங்கும் பொழுது இந்த உலகம் எங்க போச்சு? அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு மயக்கம் ஏற்பட்டது, கீழே விழுந்துட்டோம், மூர்ச்சையாகி, அப்ப இந்த உலகம் எங்க போச்சு? கோமால இருக்கிறவனுக்கு இந்த உலகம் தெரியலையே. இல்ல ஒரு பெரிய ஆபரேஷனுக்காக அவனுக்கு அனஸ்தீஷியா மயக்க மருந்து கொடுத்துட்டா இந்த உலகம் தெரியலையே. அப்ப சென்சஸ்னால இன்ட்ராக்ட் பண்றதுனாலதான் இந்த உலகம் இருக்கு. சென்சஸ்னால நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணல அப்படின்னுட்டா இந்த உலகம் இல்லை. இப்ப ஞான இந்திரியங்கள் 5, கர்ம இந்திரியங்கள் 5, மனதுன்னு ஒண்ணு சேர்த்து 11 இந்திரியங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு. பிரபஞ்சம் ஜடம். பிரபஞ்சம் நம்ம கிட்டக்க வந்து நான் இருக்கேன்னு சொல்லல, நீ தான் இந்த பிரபஞ்சம் இருக்குன்னு சொல்ற. பகவான் ரமணரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஃபாரினர் வந்தார். அந்த ஃபாரினர் கிட்ட பகவான் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த ஃபாரினர் பகவானை பார்த்து கேட்கிறார், உங்களுடைய சித்தாந்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார் ரமணரை பார்த்து. ரமணர் சொல்றார், உன்னுடைய சித்தாந்தம் என்ன அப்படின்னா, அவர் சொல்றார், உலகம் முழுவதும் வாசுதேவமயமா பார்க்கிறது தான் என்னுடைய சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறார். ரமணர் சொல்றார், உலகம் முழுக்க வாசுதேவமயமா பார்த்துட்டு ஒன்னு நீ வாசுதேவனா பார்க்கலன்னா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ஒன்னு நீ வாசுதேவனா பார்த்துட்டியானால் பிரபஞ்சம் தானா வாசுதேவமயமா ஆயிடும் அப்படிங்கிறார். அப்ப இதுதான் மனிதன் அடைய வேண்டிய ஒரு உன்னத ஸ்திதி. தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது. இத பல வார்த்தைகள்னால சொல்லலாம். எப்படி பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவானிதி சப்தியத்தேன்னு சொன்னோமோ அது மாதிரி ஜீவன் முக்தி, வாசனாக்ஷயம், மனோநாசம், பிறப்பற்ற நிலை, விடுதலை அப்படின்னு எப்படி சொன்னாலும் இது ஒண்ணுதான். அத்தகைய ஒரு நிலையை அடையறதுக்கு பிரசித்தியான மார்க்கங்கள் கர்மயோகம், தியான யோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், அது மாதிரி ராஜயோகம், இப்படி பல மார்க்கங்கள். இப்படி பல மார்க்கங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு சிம்பிளஸ்ட் வே, ரொம்ப எளிமையா இருக்கணும். எளிமையா இருக்கிறத காட்டிலும் காம்ப்ளிகேஷனே இருக்கக்கூடாது. காம்ப்ளிகேஷனே இல்லாதது மட்டும் இல்லை, எந்த ட்ரிக்கியாவும் அது இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப சிம்பிள், எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியறதா இருக்கணும். ஆனா அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து இந்த ஹையஸ்ட், இந்த ரிலீஜியனுடைய பர்பஸ் என்னவோ, இந்த ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சி, மனிதன் எதற்காக பிறந்திருக்கானோ அந்த ஆத்ம ஞானத்தை கொண்டு சேர்க்கிறதா இருக்கணும். வழி சிம்பிளா இருக்கணும். லட்சியம், உயர்ந்த லட்சியத்தை அடையறதுக்கு அடைய முடியணும் அந்த சிம்பிள் வேனால. அப்படி சில மகான்கள் வழி உலகத்துக்கு வழி காட்டியிருக்கா. அதுல சமீபமா இப்ப அப்படி ஒருத்தர் சுவாமி ராமதாஸ் அப்படிங்கிறவர், பப்பா ராமதாசன், அவர் எல்லாரும் ஆசையா கூப்பிடுவா. அவர் பிறந்ததோ 1884ஆம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் 10ஆம் தேதி கஞ்சன்காடுங்கிற ஊர்ல பிறந்தார். அதற்கு பிறகு அவருக்கு வந்து இந்த பகவானை பார்க்கணும், இந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்து டிசம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி 1922 வருஷம் தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு கிளம்பிட்டார். கிளம்பி அவர் பாரத தேசம் முழுக்க சஞ்சாரம் பண்ணியிருக்கார். பாரத தேசம் முழுக்க சஞ்சாரம் பண்ணி அவர் போகாத ஊர் கிடையாது, போகாத இடம் கிடையாது. அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணும் பொழுது தமிழ்நாட்டில இருக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரங்கள்லயே பூலோக வைகுண்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஸ்ரீரங்கம். அந்த பூலோக வைகுண்டம்னு சொல்ற க்ஷேத்திரத்துலதான் பப்பா ராமதாஸ் சந்நியாசம் வாங்கிட்டார்.
அந்த சந்நியாசம் வாங்கிண்டு இந்த வருடம் 100 வருடம் ஆறுது. அந்த 100வது வருடத்தை ஆனந்தாசிரமத்தினுடைய டிவோட்டிகள் மட்டும் இல்லை, யார் யாருக்கெல்லாம் பகவன் நாமத்துல இஷ்டம் இருக்கோ, யார் யாருக்கெல்லாம் பகவன் நாமத்துல ஆசை இருக்கோ, யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த பப்பா ராம்தாஸ் அவர் மேல பக்தி இருக்கோ, அவர்கள் எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் கொண்டாடின்னு இருக்கா. இந்த மகாத்மாவுக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னுட்டா ஒன்னே ஒண்ணுதான். அவர் உட்கார்ந்து மணிக்கணக்கா தியானம் பண்ணல, பிராணாயாமம் பண்ணல, பிரம்ம விசாரம் பண்ணல, ஒன்றும் கிடையாது. எப்பொழுதும் நாக்குல நாமா, ஹிருதயத்துல பிரேமை. எப்பொழுதும் ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா, 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 ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா அப்படிங்கிற நாமா நாக்கள நிரந்தரமா. அந்த ஆனந்த ஆசிரமத்துக்குள்ள போனாலே அந்த தெய்வீகமான சாநித்தியத்தை இன்றைக்கு நம்மளால உணர முடியும். அவர் காண்பிச்ச அந்த வழியே, அந்த ஆசிரமத்தை தொடர்ந்து கிருஷ்ணாபாய், சச்சிதானந்த மகாராஜ், இன்றைக்கு முக்தானந்தா எல்லாரும் ரொம்ப அந்த ஆசிரமத்தினுடைய புனித தன்மையை அப்படி காப்பாத்திட்டு வரா. அதுக்கு காரணம் அங்கு எப்பொழுதும் நிரந்தரமா ஒளிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ராமநாமம். அந்த ராமநாமம் உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கு. இந்த 100வது வருடம், அவர் சந்நியாசம் வாங்கின்ற வருடத்தை நாம் எல்லாரும் கொண்டாடுவோம், சந்தோஷப்படுவோம். கொண்டாட்டம்னா என்ன? நிறையா நாமம் சொல்லுவோம். நம்ம நாமம் சொல்றது தான் பப்பா ராம்தாஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய, செலுத்தக்கூடிய ஒரு பிரணாமங்கள், இல்லைன்னா நன்றி கடன். அதுதான். அதனால இந்த ஒரு சமயத்துல நான் என்னுடைய பரிபூர்ணமான நமஸ்காரங்களை சுவாமி முக்தானந்தா அவர்களுக்கும் தெரிவிச்சுண்டு, இந்த நாமம் உலகம் முழுக்க பரவி எல்லோருக்கும் நல்ல மங்களங்களை கொடுக்கட்டும்னு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. For the benefit of those who are not able to follow the Tamil rendering, we will just, synopsis has been made out. Ashirvachan given by His Holiness Sri Muralidhara Swamigal. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Initially we believe that this world is real, or rather ever existent, and then our experiences reveal its impermanence. As we grow old, our intellect and senses start losing their acuity. It is then that we realize the hollowness of the world. Before we try to know the world, we should try to know who we really are. Why does the world seem to disappear when we are sleeping? When we are given anesthesia, where does the world go? When we interact with the world through the senses, the existence is experienced. When the senses do not interact with the world, it appears non-existence. This universe does not come to you and say, "Here I am." It is you who are saying that the universe exists. A foreigner asked Bhagavan Ramana, "What is your philosophy?" Bhagavan then inquired of him, "What is yours?" He said, "To see the whole world as Vasudeva is my philosophy." Bhagavan responded, "What is the use of seeing Vasudeva in the whole world and not in yourself? If you see yourself as Vasudeva, whole universe will become Vasudeva to you." This is the supreme state a man is destined to attain, to know that he is Atmasvarupa. This state has been described as Jivan Mukti or liberation, a state beyond birth and death. All is one.
To attain this state, there are so many paths: path of jnana, path of yoga, path of karma. All should follow the simplest path, the one without any complications, and the result should be to reach the highest goal, Atma Sakshatkara. Saints have shown the way to attain this goal. One such saint is Swami Ramdas, lovingly known as Papa Swami Ramdas. He was born on the 10th of April 1884 in Kanhangad. He was blessed with the desire to know God, and he renounced everything on the 27th of December 1922. He started from home, went on a yatra all over India. During this yatra, he reached a place in Tamil Nadu which is considered Bhuloka Vaikuntham, the Srirangam. At this holy place, he adopted sannyas. This is his Sannyas Centenary year. Therefore, this is important not only for the devotees of Anandashram, but also for those who are devoted to the chanting of the divine name, and also to those who are admirers of Papa Swami Ramdas. The uniqueness of Papa Swami Ramdas is that his sadhana did not involve yoga, vichara, dhyana. His only sadhana was to constantly chant the name of God with his tongue and have prema or love in his heart for the entire manifestation. He constantly chanted Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. He said the name of Rama is the name of the nameless person. Swami Ramdas has shown a simple path for attaining the goal which has been authenticated by his own God experience. Even today when we enter Anandashram, we can experience the divine presence. The path shown by Papa Swami Ramdas has been trodden upon by Puja Mataji Krishna Bai and Swami Sachidanand Maharaj. All of them are safeguarding the sanctity of the ashram. This has been possible because of the constant chanting of Ramnam going on in the ashram. May the divine name spread throughout the world. So every day we are being blessed by Mahatmas. Every day through bhajan we are reminded of the subservience to the Almighty Lord of the universe. Every day through PPTs and so many other tools, we are being reminded of the practical application of spirituality in our workaday life. Workaday life means family life, professional life, social life. So that we are trying to bridge the gap. Previously, we were having different compartments. When we are involved in these activities, we feel our mind is terming it as spiritual. And after that, it gets disconnected as it were. Not that it disconnected in reality. God is there. But we disconnect, or the mind disconnects itself from Him. And therefore we feel separate. This are separate and that are separate. So Papa initiated this Sannyas Centenary program to bridge the gap. Never think that when you are handling your family life, he is away. Never think that when you are in your office work or various other professional activities, he is away. Never think that he is away when you are involved in social activities. He is very much with you. All that you have to do is to remember him. This is the strong message Papa is giving to us. Elsewhere, he clearly mentioned there is no divide between spiritual and material science. Both are the different sides of the same coin. When we are at the static level, before the individual gets embodied, and even while get embodied to make it active, the static aspect should be there. And the moment we become an individual, the dynamic aspect is there. The basic needs of the dynamic is met by spiritual science. The basic need of the individual inside, who is subservient to that power, that is made known through spiritual science. So spiritual science and material science should go
hand in hand. If this is clear to us, we will not separate spirituality from worldly life. Somehow this word has been put into our brain, and that is why we feel we are getting disconnected with Him. In so many ways, as we keep on going deeper and deeper and deeper into this theme, we will find a method by which this gap is bridged. And all our thoughts and words and deeds will be in conformity with this. He has facilitated so many opportunities for us to get ourselves fixed in this. And we take it that this 5-6 days program is also a part of it. As we see, as we go through each and every one, we find that Papa wanted us to get it cemented in our heart, that He is always there. Without Him, we do not have any existence at all. Every chapter, He keeps on happening this. Subservience to the higher power. At the same time, jnana is necessary to know that He is all-pervading. The other one, he calls it as parabhakti. If time permits, we will try to go through it this evening. And now we will have one more additional program. It's not program. The other day we distributed a book, you remember? Kaitama and Larry Mama, no? You can call them. They came all the way from Seattle. They have taken the pains to compile. Oh. 50 agreement. 10 minutes. The whole video will be running for 30 minutes. So we will have 10 minutes, 15 minutes now, and the rest of the portion can be, otherwise Ramnam will be disturbed. And then the balance can be shown in the next one. Theme is important, no? Theme is important. We will have the privilege of seeing Papa also in this video. So the Mother Hamilton, a highly spiritual, evolved soul, she makes a mention about Papa, and devotees have been prompted to take up these videos, stitch it together. The words are authored by Mother, though it is rendered by their devotee. So we will have this privilege. We will have now 10 or 15 minutes, and then we can have Ramnam. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Satya. இருங்கோ இப்போ வீடியோ வரும்னா இப்போ வீடியோ வரும் போடலாம். Anandashram, mother and father, Hamilton's trip to India. These pictures are of Anandashram, or abode of bliss, the residence of Swami Ramdas, meaning servant of God. He received his vision of God in 1926, after 2 years of sannyasi wanderings about India, during which he had many wonderful experiences under God's guidance. The ashram was started in 1932 with one small building. On a bare knoll, infested by snakes and frequently visited by jackals and hyenas. Ramdas's devotees all over India provided the means, and Mother Krishnabai, or Mataji, meaning Holy Mother, provided the effort and supervision to build the ashram to the state in which you will see it, one of the finest and best kept such retreats in India. Thousands visit here each year from all over the world
staying for an hour, a day, or several months. The feeding of 1,000 poor people on a feast day is not unusual. Mother Krishnabai never worries about the means or wherewithal to extend her charities. She says that is up to Ramdas. He puts it up to God, and God never lets them wait very long. Ramdas says they certainly keep that chap very busy. Ramdas's teaching is essentially very simple. He says, practice Ram Nam, Japa, and Bhajan constantly. That means keep the name of God on your lips and in your heart always. He will take care of the rest. Our film opens with views of the ashram compound and buildings, constructed on a 6-acre plot, surrounded by a 4-foot ornamental stone wall with a main gate and guardhouse to keep out animals, beggars, and other undesirables, for the benefit of visitors, not Ramdas. Ashram compound from the road in front, the dispensary and hospital, other buildings, in the trees on the knoll. Meeting place under banyan trees, looking out to the main gate. Completed platform and circular flower bed, newly completed for Sannyas Day meeting. The view from the platform of green valleys and brown hills, with the Arabian Sea only 3 miles away. The main guest house. The governor of Kerala State comes to spend 3 days in rest and conversation with Papa. Flagpole and guard. Gathered to see the governor go out. The other side of the guest house, which was built by the Maharani of Hyderabad. The little pandal or bamboo and matting shelter is an emergency bathroom for the governor of Kerala State's visit. Front view of the Bhajan Hall, main building, with decorations put up for Sannyas Day celebration. A close-up of the Bhajan Hall, Ramdas and Reverend Mildred on the steps. Rear of the Bhajan Hall, office building, kitchen and dining hall building, and laundry. Our purpose in visiting the ashram was to spend time in the presence of a saintly man, satsang, as they call it in India. Ramdas was available at all times, but in the cool of the morning, afternoon, and evening, he would come out and sit with his devotees and give us discourses on many holy subjects. At other times, he would stroll around the grounds.
Papa talking to devotees under the banyan tree during Sannyas Day anniversary celebration. Here, no? स्वामी रामदास तेरी अमर महिमा, हे गुरु जगदाधारा, जय जयकार। जब तक सूरज चांद गगन में, जब तक सूरज। Lakshmi carries Sridhar to join Papa in group. Srimati Lakshmi Kautau Ramchari, a woman member of Congress from Madurai, shoos the flies. मन मंदिर में कृपा करो, अज्ञान हरो प्रभु, कृपा करो, अज्ञान हरो। Mother Krishnabai comes to join Papa and the group as they listen to bhajan singing. Lal Chand, formerly of Karachi, Pakistan before partition, leads the singing as he plays harmonium. Gopal plays the tablas. Subram and others sing responses and clap hands in time with the beat. Little Sridhar claps hands and sings too, as do the other children. श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय Papa chats with two men visitors. Swami Ramdas, Swami Sachidananda, his chief disciple, and Sridhar off for an afternoon stroll. Activities around the ashram are many and varied. Sadhus and sannyasis come and go. Men who have renounced all worldly things and wander India, sleeping where night catches them, living in caves, forests, or ashrams, seldom staying at one place more than a few days, eating what is given them. At the ashram, they stay in a specially built sadhushala, or rest house for sadhus. The everyday activities and work is most interesting and done by hand as it has been from time memorial. Stacking hay, carrying water, and other loads are some of the things we photographed. The people, especially the lovely bright-eyed children, are always colorful and active. Most friendly and hospitable, they did everything to make us feel at home. A sadhu arrives. Another one comes, with deluxe equipment of umbrella and fancy water pot. Singing, chanting, and conch blowing were frequently heard from the sadhushala. A handsome sadhu stops to chat. Some were very friendly, most very reserved. A group of sadhus agrees to some pictures. They put on formal clothes for the occasion. The markings on forehead, chest, and arms are of the Das sect of Vaishnavites, or servants of God in his aspect of Vishnu the Preserver. One stands in traditional penance posture.
to get hay on a stack, you must first get it on your head. Okay. Rest of the portion we will play. Huh? Okay, okay. That's enough. Good. Next time we can have Ramnam. Please be here exactly at 3:30. Rest of the portion you will see. It gives us some idea about the old ashram, no? And where we are sitting now, this is the place where he is sanctified by sitting and giving satsang. Ram Jai Jai Ram. Sundara. Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram
जय राम ओम श्री राम जय राम जय 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 जय
Shri Ram Jai
Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Prayer for world peace. Adorable presence, thou who art within and without, above and below and all around, thou who art interpenetrating the very cells of our beings, thou who art the eyes of our eyes, the ears of our ears, the heart of our hearts, the mind of our minds, the breath of our breaths, the life of our lives, and the soul of our souls. Bless us, dear God, Bless us, dear God, to be aware of Thy presence be aware of Thy presence now and here. now and here. This is all that we ask of Thee. This is all that we ask of Thee. May all of us be aware May all of us be aware of Thy presence of Thy presence in the east and the west, in the east and the west, in the north and the south. in the north and the south. May peace and goodwill May peace and goodwill abide among individuals abide among individuals as well as communities and nations. as well as communities and nations. This is our earnest prayer. This is our earnest prayer. May peace be unto all. May peace be unto all. Om Tat Sat Om. Om Tat Sat Om. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. O beginningless and endless Param Pujya Papa, O beginningless and endless Param Pujya Papa, you are all pervading. you are all pervading. You have manifested You have manifested as the entire universe, as the entire universe, and you reside in everything. and you reside in everything. We pray for your blessings, We pray for your blessings, for the eradication of all conflicts and fights of all conflicts and fights in all parts of the world, in all parts of the world, and for the bestowal and for the bestowal of peace and happiness of peace and happiness on one and all, on one and all, within and without. within and without. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Universal prayer, no need to repeat. O Lord of the universe, O Creator, Protector, and Destroyer of the worlds, I come in all humility to Thy holy feet and surrender myself entirely to Thee. Deign to bless me ever with Thy remembrance. O merciful Divine Master, give me strength, purity, and peace. Thou art absolute power, omniscient and omnipresent. Thou art seated in the hearts of all. Thou art all purity, all goodness, and all love. Thou art a veritable ocean of peace and bliss. Thou art the lover of Thy devotees, refuge of the helpless, Redeemer and Savior of those who resign themselves to Thee. Make me dedicate my life to Thee and to Thy service. By Thy grace, may peace and joy always dwell in my heart. Thou art Mother, Master, Friend, and all to me. Accept me as Thy child and servant. Grant me power to love Thee with all my heart. Let whatever I do be a fitting offering at Thy holy feet. Make me pure in thought, word, and deed. I lay my mind at Thy feet. Fill it always with Thy remembrance. Let Thy glorious light illumine my heart. O Sustainer of the worlds, O kind and compassionate Lord, God of gods, give me the divine vision so that I may behold Thee in all as all. Make me ever feel Thy constant fellowship. May my life be guided and controlled by Thee. Thy presence be ever with me, in me, and everywhere around me. I beg of Thee, I prostrate before Thee. Hearken to this heartfelt prayer of mine, and make me Thine and Thine only, forever and ever. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Aarti number 8. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ram Jai Ram
भारी कराया भरी अंतरा के मनाने करी कृत्य में जे हसे घड़ा समावया करी सर्वभावे मला तू विशुद्ध आचारी विचारी तसेवा विशुद्ध असेवा हि लो त्वत्पदीने मनाने बनावे तु वाक्ये सदा त्वत्स्मृतीने तुझा दिव्य रूपे प्रकाशित वाहे मदी अंतरी सर्वहि दिव्यवान् जगत पालका सर्वदेवादिदेवा प्रभो मला दिव्य दृष्टि
आरती गुरुराया ओवाली तो तव पाया आरती गुरुराया ओवाली तो तव समर्थ श्रेष्ठ कृपाल करिकाया समर्थ श्रेष्ठ कृपाल करिकाया आरती गुरुराया ओवाली तो तव पाया आरती गुरुराया ओवाली तो तव पाया ब्रह्मा विष्णू शंकर हे तुझेच अवतार ब्रह्मा विष्णू शंकर हे तुझेच अवतार जगासी चालवीत तुझी एक साचार जगासी चालवीत तुझी एक साचार आरती गुरुराया ओवाली तो तव पाय आरती गुरुराया ओवाली तो तव पाय सर्वांच्या अंतर्यामी नित्यवसतोसि स्वामी सर्वांच्या अंतर्यामी नित्यवसतोसि स्वामी भक्त अंतर प्रगटोसि सदा उभा तत्कामी भक्त अंतरि प्रगटोसि सदा उभा सत्कामी सगुण आणि निर्गुण विवेके दिसती अभिन्न सगुण आणि निर्गुण विवेके दिसती अभिन्न कैवल्याची खरी बाणली गुरु कृपेची गुण कैवल्याची खरी बाणली गुरु कृपेची गुण आरती गुरुराया ओवाली तो तव पाया आरती गुरुराया ओवाली तो तव पाया समर्थ श्रेष्ठ कृपाल करिकाया समर्थ श्रेष्ठ
कारणी देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे हेची आता उपासनेला दृढ चाल बावे भूदेव संतासी सदा लभावे सकर्मयोगे वय घालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे समर्थांची या सेवका वक्रपा है असा सर्व भूमंडली कोण आहे जयाची लीला वर्णिती लोकतीनी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझे त्या त्या स्थळी हे निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी ते तुझे सद्गुरु पाय दोनी हरि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय हरि शांति 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 हरि ओम आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम सब संतन पपाई की जय 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 गुरुदेव समर्थ ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम जय राम जय जय राम ओम श्री 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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री
Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Sri 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 Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om
जय सद्गुरुमूर्ति की जय। देव पूजा माझी देव पूजा, 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 पाय तुझे गुरुराया गुरुराया गुरुराया, पाय तुझे गुरुराया गुरुराया गुरुराया, देव पूजा माझी देव पूजा, देव पूजा माझी देव पूजा, गुरुचरणाची माती गुरुचरणाची माती, गुरुचरणाची माती गुरुचरणाची माती, तेची माझी भागीरथी तेची माझी भागीरथी, तेची माझी भागीरथी तेची माझी भागीरथी, पाय तुझे गुरुराया गुरुराया गुरुराया, देव पूजा माझी देव पूजा, गुरुचरणाचा बिंदू गुरुचरणाचा बिंदू, गुरुचरणाचा बिंदू गुरुचरणाचा बिंदू, तेची माझी शिर सिंधू तेची माझी शिर सिंधू, तेची माझी शिर सिंधू तेची माझी शिर सिंधू, पाय तुझे गुरुराया गुरुराया गुरुराया, पाय तुझे गुरुराया गुरुराया गुरुराया, देव पूजा माझी देव पूजा, देव पूजा माझी देव पूजा, गुरुचरणाचे ध्यान गुरुचरणाचे ध्यान, गुरुचरणाचे ध्यान गुरुचरणाचे ध्यान, तेची माझी संध्या स्नान तेची माझी संध्या स्नान, तेची माझी संध्या स्नान तेची माझी संध्या स्नान, पाय तुझे गुरुराया गुरुराया गुरुराया, पाय तुझे गुरुराया गुरुराया गुरुराया, देव पूजा माझी देव पूजा, शिवदिन केसरी पायी शिवदिन केसरी पायी, शिवदिन केसरी पायी शिवदिन केसरी पायी, सद्गुरु वाचुनी दैवत नाही सद्गुरु वाचुनी दैवत नाही, सद्गुरु वाचुनी दैवत नाही सद्गुरु वाचुनी दैवत नाही, पाय तुझे गुरुराया गुरुराया गुरुराया, देव पूजा देव पूजा देव पूजा माझी देव पूजा, जय सद्गुरु चरणारविंद की जय। நானொழிந்து நீயாக வேண்டுமையா, நானொழிந்து நீயாக வேண்டுமையா, நானொழிந்து நீயாக வேண்டுமையா, நானொழிந்து நீயாக வேண்டுமையா,
தானாகி நின்றதை பிரம்மம் என்று கூறுவர். தானாகி நின்றதை பிரம்மம் என்று கூறுவர். தானாகி நின்றதை பிரம்மம் என்று கூறுவர். பிரம்மமாகி நிற்பதே நீ என்று கூறுவேன். பிரம்மமாகி நிற்பதே நீ என்று கூறுவேன். நான் ஒழிந்து நீயாக வேண்டுமையா. நான் ஒழிந்து நீயாக வேண்டுமையா. மானாடும் மயிலாடும் ஆட்டத்திற்களவுண்டு. மானாடும் மயிலாடும் ஆட்டத்திற்களவுண்டு. மானாடும் மயிலாடும் ஆட்டத்திற்களவுண்டு. மானாடும் மயிலாடும் ஆட்டத்திற்களவுண்டு. மனமாடும் ஆட்டத்திற்கு அளவே இல்லை. என் மனமாடும் ஆட்டத்திற்கு அளவே இல்லை. அளவில்ல ஆட்டத்தால் அகிலத்தில் அலைகின்றேன். அளவில்ல ஆட்டத்தால் அகிலத்தில் அலைகின்றேன். அளவில்ல ஆட்டத்தால் அகிலத்தில் அலைகின்றேன். அளவில்ல ஆட்டத்தால் அகிலத்தில் அலைகின்றேன். அரும்பாடுபட்டும் உள்ளே அமைதியே இல்லை. அரும்பாடும் பட்டும் உள்ளே அமைதியே இல்லை. அமைதியில்லா வாழ்வு அடியனுக்கு எதற்காக. அமைதியில்லா வாழ்வு அடியனுக்கு எதற்காக. அமைதியில்லா வாழ்வு அடியனுக்கு எதற்காக. அமைதியில்லா வாழ்வு அடியனுக்கு எதற்காக. அழித்து விடு என் ஆணவத்தை. அழித்து விடு என் ஆணவத்தை. ஆணவம் அழிந்தால்தான் அறிய முடியும் உன்னை. 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 அண்டி வந்தேன் ஞான ஆனந்த வள்ளலே. அண்டி வந்தேன் ஞான ஆனந்த வல்லனே. அண்டி வந்தேன் ஞான ஆனந்த வல்லலே. அண்டி வந்தேன் ஞான ஆனந்த வல்லலே. நான் ஒழிந்து நீயாக வேண்டுமையா. நாதாந்த துய்யனே வேதாந்தமையனே. நான் ஒழிந்து நீயாக வேண்டுமையா வேண்டுமையா வேண்டுமையா. सद्गुरु ने माज आशीर्वाद दिला. 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 हर्ष भराला हृदय माज. हर्ष भराला हृदय माज. हर्ष भराला हृदय माज. हर्ष भराला हृदय माज. सद्गुरु ने माज श्री गुरु ने माज. जय गुरु ने माज आशीर्वाद दिला. सद्गुरु ने माज श्री गुरु ने माज. जय गुरु ने माज आशीर्वाद दिला. हृदय जवाब
हृदयींचा भाव कळला गुरुजी हृदयींचा भाव कळला गुरुजी हृदयींचा भाव कळला गुरुजी आनंद उल्लासी बोले माझ आनंद उल्लासी बोले माझ आनंद उल्लासी बोले माझ आनंद उल्लासी बोले माझ बोले माझ गुरु कृपा तो करुणी 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 तुका म्हणे म्हणे आनंदेलो तुका म्हणे म्हणे आनंदेलो सद्गुरुने माझ श्री गुरुने माझ जय गुरुने माझ आशीर्वाद दिला सद्गुरुने माझ श्री गुरुने माझ जय गुरुने माझ आशीर्वाद दिला आशीर्वाद दिला आशीर्वाद दिला गुरु माता गुरु पिता गुरु माता गुरु पिता गुरु हमुची कुल देवता 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 गुरु आमुचे कुल देवता 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 गुरु माता गुरु पिता गुरु पिता गुरु पिता तोर पडता संकटे तोर पडता संकटे तोर पडता संकटे तोर पडता संकटे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु रक्षी मागे पुढे तोर पडता संकटे गुरु रक्षी मागे पुढे तोर पडता संकटे गुरु रक्षी मागे पुढे गुरु माता गुरु पिता गुरु हमुची कुल देवता 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 गुरु माता गुरु पिता गुरु पिता गुरु पिता काय वाचा आणि मन काय वाचा आणि मन काय वाचा आणि मन काय वाचा आणि मन गुरु चरणी ते अर्पण गुरु चरणी ते अर्पण काय वाचा आणि मन गुरु चरणी ते अर्पण काय वाचा आणि मन गुरु चरणी ते अर्पण एक जनार्दनी चरण एक जनार्दनी चरण एक जनार्दनी एक जनार्दनी एक जनार्दनी चरण एक जनार्दनी एक जनार्दनी एक जनार्दनी चरण गुरु एक जनार्दन गुरु एक
राम कृष्ण हरी पांडुरंग हरी 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 कालवेल नाम उच्चारित नाही कालवेल नाम उच्चारिता नाही कालवेल नाम उच्चारित नाही कालवेल नाम उच्चारिता नाही तोही पक्ष पाही उतारदी तोही पक्ष पाही उतरादी राम कृष्ण हरी पांडुरंग हरी 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 राम कृष्ण नाम सर्वां दोषहरण राम कृष्ण नाम सर्वां दोषामहरण राम कृष्ण नाम सर्वां दोषहरण राम कृष्ण नाम सर्वां दोषामहरण जडा जीव तारण हरी एक जडा जीव तारण हरे एक राम कृष्ण हरी पांडुरंग हरी 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 हरी नाम सार जीवाया नामाची हरि नाम सार जीवाय नामाची हरी नाम सार जीवाया नामाची हरि नाम सार जीवाय नामाची उभा मध्य दैवासी ओनवाणी उभा मध्य दैवाशी कोणवाणी उभा मध्य दैवासी ओनवाणी उभा मध्य दैवाशी कोणवाणी राम कृष्ण हरी पांडुरंग हरी 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 ज्ञानदेव सांग ज्याला नाम पाठ ज्ञानदेव सांग ज्याला नाम पाठ ज्ञानदेव 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 सांग ज्याला नाम पाठ ज्ञानदेव 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 सांग ज्याला नाम पाठ पूर्वज वैकुंठ मार्ग सोपे पूर्वज वैकुंठ मार्ग सोपे पूर्वज वैकुंठ मार्ग सोपे राम कृष्ण हरी पांडुरंग हरी राम कृष्ण हरी पांडुरंग हरी राम कृष्ण हरी पांडुरंग हरी राम कृष्ण हरी वरदे हरी विठ्ठल सुखासाठी करीसी तळमळ सुखासाठी करीसी तळमळ सुखासाठी करीसी तळमळ सुखासाठी करीसी तळमळ परी तो पंढरीची जाई
एक वेळ तरी तू पंढरीसी जाई एक वेळ परी तू पंढरीची जाई एक वेळ तरी तू पंढरीसी जाई एक वेळ सुखासाठी करीसी तळमळ सुखासाठी करीसी तळमळ मग तू अवकाश सुख रूप होती मग तू अवकाश सुख रूप होते जन्मोजन्मीचे दुःख विसरती जन्मोजन्मीचे दुःख विसरसी सुखासाठी करीती तळमळ सुखासाठी करीसी तळमळ चंद्रभागे करिता एक स्नान चंद्रभागे करिता एक स्नान तुझे दोष पळतील रानोरान तुझे दोष पळती रानोरान सुखासाठी करीती तळमळ सुखासाठी करीसी तळमळ लोटांगण घालून महाद्वारी लोटांगण घालून महाद्वारी कान धरुणी नाचेन गरुडबारी कान धरुणी नाचेन गरुड पारी सुखासाठी करीती तळमळ सुखासाठी करीसी तळमळ नामा माने उपमा काय द्यावे नामा माने उपमा काय द्यावे नामा माने काय धावे माझ्या विठोबाला माझ्या विठोबाला माझ्या विठोबाला आलबल द्यावे माझ्या विठोबाला माझ्या विठोबाला माझ्या विठोबाला आलबल द्यावे सुखासाठी करीसी तळमळ सुखासाठी करीसी तळमळ तरी तो पंढरीसी जाई एक वेळ बोला पुंडलीक वरदे எந்த இடம் சென்றாலும் எந்த முகம் பார்த்தாலும் எந்தனுக்கு தெரிவது உந்தன் முகமே எந்த இடம் சென்றாலும் எந்த முகம் பார்த்தாலும் எந்தனுக்கு தெரிவது உந்தன் முகமே எந்த இடம் சென்றாலும் எந்த முகம் பார்த்தாலும் எந்தனுக்கு தெரிவது உந்தன் முகமே எந்த இடம் சென்றாலும் எந்த முகம் பார்த்தாலும் எந்தனுக்கு தெரிவது உந்தன் முகமே என் சிந்தையிலே விளையாட வந்த முகமே என் சிந்தையிலே விளையாட வந்த முகமே சிந்தையிலே விளையாட வந்த முகமே என் சிந்தையிலே விளையாட வந்த முகமே குருநாதன் முகமே குருநாதன் முகமே ராமதாசன் முகமே ராமதாசன் முகமே எந்த இடம் சென்றாலும் எந்த முகம் பார்த்தாலும் எந்தனுக்கு தெரிவது
உந்தன் முகமே சுந்தரமாய் தெரிவது உந்தன் முகமே அதி சுந்தரமாய் தெரிவது உந்தன் முகமே அதி சுந்தரமாய் தெரிவது உந்தன் முகமே சிந்தையிலே விளையாட வந்த முகமே சிந்தையிலே விளையாட வந்த முகமே குருநாதன் முகமே குருநாதன் முகமே ராமதாசன் முகமே ராமதாசன் முகமே கந்தன் கதை கேட்டாலும் கண்ணன் கதை கேட்டாலும் கண்ணன் கதை கேட்டாலும் கண்ணன் கதை கேட்டாலும் கந்தன் கதை கேட்டாலும் கண்ணன் கதை கேட்டாலும் கந்தன் கதை கேட்டாலும் கண்ணன் கதை கேட்டாலும் கருத்தினில் இருப்பது உந்தன் முகமே கருத்தினில் இருப்பது உந்தன் முகமே சிந்தையிலே விளையாட வந்த முகமே சிந்தையிலே விளையாட வந்த முகமே குருநாதன் முகமே ராமதாசன் முகமே என்ன பிழை நேர்ந்தாலும் என்ன நிலை வந்தாலும் என்ன பிழை நேர்ந்தாலும் எந்த நிலை வந்தாலும் எந்தனுக்கு துணையாவது உந்தன் முகமே எந்தனுக்கு துணையாவது உந்தன் முகமே சிந்தையிலே விளையாட வந்த முகமே சிந்தையிலே விளையாட வந்த முகமே குருநாதன் முகமே ராமதாசன் முகமே எந்த இடம் சென்றாலும் எந்த முகம் பார்த்தாலும் எந்தனுக்கு தெரிவது உந்தன் முகமே உந்தன் முகமே உந்தன் முகமே கண்ணன் சொன்னதென்ன கீதையிலே அதை கருத்தில் கொள்வாயுந்தன் வாழ்க்கையிலே கண்ணன் சொன்னதென்ன கீதையிலே அதை கருத்தில் கொள்வாயுந்தன் வாழ்க்கையிலே கண்ணன் சொன்னதென்ன கீதையிலே அதை கருத்தில் கொள்வாயுந்தன் வாழ்க்கையிலே அண்ணன் தம்பி சுற்றம் என்பதெல்லாம் அண்ணன் தம்பி சுற்றம் என்பதெல்லாம் உந்தன் கருவில் குழப்பம் தரும் பாசமென்றார் அண்ணன் தம்பி சுற்றம் என்பதெல்லாம் உந்தன் அறிவில் குழப்பம் தரும் பாசமென்றார் கண்ணன் சொன்னதென்ன கீதையிலே அதை கருத்தில் கொள்வாயுந்தன் வாழ்க்கையிலே அவன் பெயரை சொல்லி கடமையை செய் அவன் பெயரை சொல்லி கடமையை செய்யதன் விளைவுகள் அவனுக்கே அர்ப்பணம் செய் அவன் பெயரை சொல்லி கடமையை செய்யதன் விளைவுகள் அவனுக்கே அர்ப்பணம் செய் எவனதை செய்தாலும் அவன் அறிவான் எவனதை செய்தாலும் அவன் அறிவானந்த எண்ணத்தின் தரம் கண்டு பலன் தருவார் எவனதை செய்தாலும் அவன் அறிவானந்த எண்ணத்தின் தரம் கண்டு பலன் தருவான் கண்ண சொன்னதென்ன
கருத்தில் கொள்வாயுந்தன் வாழ்க்கையிலே கண்ண சொன்னதென்ன கீதையிலே அதை கருத்தில் கொள்வாயுந்தன் வாழ்க்கையிலே நம் வாழ்க்கையிலே நம் வாழ்க்கையிலே ज्याची वंशी कुलधर्म राम सेवा 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 ज्याची वंशी माझा जन्म देग देवा 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 राजा राम 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 राजा राजा राम राजा राम राजा ज्याची वाणी रंगली रामनामी ज्याची वाणी रंगली रामनामी ज्याची वाणी रंगली रामनामी ज्याची वाणी रंगली रामनामी ज्याशी माझ्याशी संवाद घडो स्वामी ज्याची माझ्याशी संवाद घडो स्वामी ज्याशी माझ्याशी संवाद घडो स्वामी ज्याची माझ्याशी संवाद घडो स्वामी राजा राम 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 राजा वारंवार वारंवार विनंती परिसावी वारंवार विनंती परिसावी वारंवार विनंती परिसावी वारंवार विनंती परिसावी कृपा सिंधू सत्वर सिद्धी न्यावी 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 बोल राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा मणे उद्धव चिदन महाराजा मणे उद्धव चिदन महाराजा मणे उद्धव चिदन महाराजा मणे उद्धव चिदन महाराजा रामदासाचा संग घडो माझा रामदासाचा संग घडो माझा रामदासाचा संग घडो माझा घडो माझा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा
चंद्रमूर्ति की जय। देह जाओ अथवा रहो, देह जाओ अथवा रहो, देह जाओ अथवा रहो, देह जाओ अथवा रहो। पांडुरंगी दृढ़ भाव, पांडुरंगी दृढ़ भाव, पांडुरंगी दृढ़ भाव, पांडुरंगी दृढ़ भाव। देह जाओ अथवा रहो, देह जाओ अथवा रहो, शरणन सोडी सर्वदा, शरणन सोडी सर्वदा, शरणन सोडी सर्वदा, शरणन सोडी सर्वदा। आन तुझी पंढरीनाथ, आन तुझे पंढरीनाथ, देह जावो अथवा रावो, देह जावो अथवा रावो। वदनी तुझी मंगळ नाव, वदनी तुझी मंगल नाम, वदनी तुझी मंगळ नाव, वदनी तुझी मंगल नाम। हृदयी मगंडित प्रेम प्रेम, हृदय अखंडित प्रेम प्रेम, नामा माने केस
we will now have the second part of the video, no? About ashram, and the words of Mother Hamilton. Ah. To get hay on a stack, you must first get it on your head. Then you must climb a ladder. No messy machinery around here. Mataji and Ramdas supervise. Old Ture de Kana carries a bale of fresh cut grass to the cows. The grass is kept cut by human lawnmowers armed with short sickles. Water is distributed to necessary points by head power, usually a woman's. Some carry a copper pot full and never spill a drop. Carrying water from the well, the last one to have any when we left in May. Here's the well. Note, small bucket used because the water was so low. Water was not exactly comparable with our water, but nobody complained. जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता मेरे राम के दरबार में सब जीवों का खाता मेरे Swami Krishnananda on his way to morning bath. सब जीवों का खाता Charcoal burners carry in the day's work on their heads. The bags weigh 60 to 80 pounds. They carry them perhaps 6 miles and earn 2 rupees or 45 cents a day. Lakshmi and her children, Sridhar and sister Shishila. Little one is lost and forlorn, sits and cries. Bigger boy asks him what's wrong, then says, "Come on, and we'll find your mother." Indian children take wonderful care of little brothers and sisters. बड़ा कड़ा कानून है उसका बड़ी कड़ी मर्यादा बड़ा कड़ा कानून है उसका बड़ी कड़ी मर्यादा किसी को कौड़ी Little Vivekananda is having a lovely time in the hot sun until Nemesis in the form of Mother with a cloth appears. Now joy is more restrained. Sridhar and his aunt Ganga. Possible. And this Sridhar is singing the Ram Nam every day morning. Eh? Morning, yeah. Yeah. Then. Women and children around the ashram.
colorful saris worn by a group of women on the village street. Children always have to get into a picture. करता है इंसाफ सभी का गुरु आसन पर डट के उसका फैसला कोई न बदले लाख कोई सर पटके उसका फैसला कोई न बदले लाख कोई सर पटके समझदार तो चुप रह जाता मूर्ख शोर मचाता मेरे राम के दरबार में सब जीवों का खाता मेरे राम के दरबार में सब जीवों का खाता उजली करनी करो हमेशा कर्मन करियो काला उजली करनी करो हमेशा कर्मन करियो काला लाख आंख से देख रहा है मोहन मुरली वाला A tonga, an ancient form of conveyance. सबसे चाहे Young Muslim girls bring their little brothers and sisters to dinner. दरबार में सब जीवों का खाता मेरे राम के दरबार में सब जीवों का खाता जितना जिसके The ashram was almost always filled with music of one kind or another. Even at night, the howling of roving jackals and the drums and conches of a nearby temple kept us from being bored. Some wonderful singers and instrumentalists visited and performed, much to our delight. A number of feast days were observed, including Go Puja, or Cow Worship Day, Ram Das's birthday and Sannyas anniversary, and a 3-day visit from the governor of Kerala state. We saw the ceremonies of a young Brahmin boy receiving his sacred thread on his 13th birthday, marking him as a man capable of assuming certain responsibilities. We were invited to a Hindu wedding. We saw poor feeding. 1,000 people fed, one meal each day, on 3 successive days. Woman singer Mathurabai and young tabla player Ram Kishore, wonderfully sweet voice, tremendous range and amazing control as most Indian singers have. They are trained in breath and vocal control from childhood. She plays a tambour and uses a clacker with castanets in it for keeping time. Most Indian music has a definite rhythm and sometimes a real hot beat. Note her concentration. She is most devout, and her songs are the typical religious music of India. पावत नहीं पार शेष पावत नहीं पार शेष झावत सुर मुनि नरेश पावत नहीं पार शेष झावत सुर मुनि नरेश गावत गिरिजा गणेश गावत गिरिजा गणेश. Here is Mathurabai. She comes from Ahmedabad in Sindh country. Go Puja, or cow worship ceremonies. These include putting round markings of milk on the cows, putting flour and paste on their heads, bowing to them, and garlanding the bulls. Here are buffalo cows in a wallow. Not the cleanest bath, but very cooling. The one drying off has a little white heron in attendance to pick off the flies and insects. Buffaloes have no hair, so they must get into the water frequently to avoid being fried by the hot sun. The governor of Kerala state, Ramakrishna Rao, came for a 3-day visit with his aides, an armed guard, and a flag requiring the erection of a pole. Swami Atmananda, who had been in jail with him during the Gandhi days of civil disobedience.
walks over to inspect the dispensary. Guard of honor is dismissed. A young woman from Saurashtra, Guli Chablani, who became a very dear friend, pays her respect to another woman by taking the dust from her feet. Saraswati, the beautiful wife of the ashram doctor, and the doctor himself, R. Kupaswami. Here they leave their house bound for a gathering. The man always walks ahead, followed by their maidservant, who works from 9 to 5, 6 days a week, and is given 2 meals a day and 8 rupees a month, about $1.75. The ashram built and operated a school for many years. It was the custom then to give all the children new clothes once a year. The school is now run by the state, but the giving of new cloth is carried on. Here the youngsters march in singing and seat themselves on the platform before Ramdas. Each one comes up for the new clothes and runs off to change. These may be the only new clothes the kids will get all year. See the girls sitting on the left and the boys on the right. Prasad, plantains in this case, are distributed to all. A young boy has just received his sacred thread of the Brahmin caste and is robed in the ceremonial red cloth, indicating he has reached maturity. It's given to all Brahmin boys at the age of 12. Among Indian instruments, the sitar is perhaps the most difficult one to master. Here a master and his pupil practice together. The sitar has 13 strings, one of which is used for melody or time. The others, being in 2 groups of 6, are used for chord accompaniment. Note the rapid fingering and use of the melody string. A young friend also enjoys the music. Grounds are decorated for Swami Ramdas's birthday celebration. 250 guests were at the ashram. As part of the celebration, the poor are fed. Here are some waiting at the gate for their turn to dine.
varied quality and quantity of clothes. Guru Charana, Guru Charana, Guru Charana, Guru Charana, Sadguru Charana, Bhavaharana, Sadguru Charana. Now they are trooping in to take their places at the dining table. Guru Charana, Bhavaharana, Sadguru Charana, Bhavaharana, Sri Guru Charana, Bhavaharana, Sri Guru Charana, Bhavaharana, Sri Guru Charana, Bhavaharana, Sri Guru Charana, Bhavaharana, Parama Guru Charana, Bhavaharana, Parama Guru Charana, Bhavaharana, Parama Guru Charana, Bhavaharana, Parama Guru Charana, Bhavaharana, Sadguru Charana, Bhavaharana, Sadguru Charana. Here they are seated on the ground. Their dish is a large plantain leaf. Rice is heaped on it, and condiments ladled over it. Children get the same portion as adults. Leftovers are wrapped up in a corner of Mama's sari and taken home. Everybody always washes hands before and after eating. A long trough provides facilities. There's always a lot of activity around the grounds on a feast day. Women and children, crows and dogs. Here is some of it. An old sadhu leaves. A young sadhu gives us a pranam. A little girl with a skirt but no blouse. The pandal erected to shelter diners from the hot sun. A little girl carries her littler brother. Blind man led by son, using stick. Departure is such sweet sorrow. When guests leave, there's always the bustle of loading the little car and saying farewell, with garlanding, giving of gifts, and paying respect to Ramdas and Krishnabai. A typical leave-taking scene. Swami Hari Harananda comes over. Francis loads the car. How can he get all that baggage in and passengers too? Sri Ramaswamy, the editor of the ashram magazine The Vision, joins the group. A young movie producer from Bombay bows at the feet of Swamis Hari Harananda and Satchidananda. Swami Satchidananda comes down the steps to join the group. An old devotee arrives. Papa comes with his retinue. Gifts are exchanged.
departing guests climb into the car. Ramdas and Krishnabai give farewell pranam. Reverend Mildred garlands Mataji and bows at her feet. Lakshmi takes a garland and tries to make a hair ornament, but is unsuccessful. Mother Krishnabai then takes it and skillfully forms it into its right shape. Reverend Mildred leaves the guest house. She says au revoir as our picture story ends, wearing her sari and flowers in her hair. And so ended our visit to Anandashram, truly the abode of bliss. And we flew home to America. Never will we forget the loving friendship given freely to us by the many Indians of all castes that we met, and the care and consideration and thoughtfulness lavished on us by Ramdas, Mataji, Satchidananda, and the ashram people. Satsang, or being in the presence of saintly ones, is like sitting in the warm sun and feeling the heat and light flow into your whole being. Pranams. How contented we were, no, visiting there. Free from grumblings and complaints. What a simple living habit we had. How our masters lived in this ashram. With all the limitations, how they were engaged in activities that reach out to many, many deserving segments of the society. These are all the things and much more that touch and kindle in us. We are deeply grateful to Larry and Ketama. Because suddenly, many people, many of us would not have seen the old days in ashram. We have heard so many things, but we have not seen. So it was really thought-provoking. And also it gives us a message how Papa Mataji in the old days, how they were carrying on with all the activities cheerfully. Compared to that life and now, there is no we can't make out of it. You can't conceive. So we again express our gratitude, especially on this Sannyas Day. It is good. Papa prompted them to bring it here, and then made it possible for us all to see and at least to go back to the old days of the ashram. So many untold learnings are there from this. The hard-working nature, the simple village people, the children, so many. Hari Om. Now we will
First we heard Param Puja Papa's words. Yesterday we made an attempt to hear Puja Mataji's words. Now we will hear Puja Swamiji's words. Puja Swamiji, when we think of him, joined this ashram for good on 26th January 1949. Just like we say on the 27th December 1922, when he boarded the train at Mangalore on 5 o'clock, he bid farewell to the whole, which the world to which he belonged. Similarly, on 26th January 1949, Puja Swamiji came and offered his entire thing at the holy feet of Papa Mataji, never looked back. Many people closely associate with many noble ones, but rare are the ones who imbibe and make it a reality in their life. The moment we think about Swamiji, what comes to our mind is the self-effacement. Even when he was totally involved in all activities, nobody will find that he is always busy or he talks anything about that. We started coming here from 64 onwards, but only after coming here in 89 to spend more time in ashram, we came to know the load of work Swamiji was carrying. But during the previous 25 years, we used to spend some time with Swamiji, of course with Mataji more and then with Swamiji. But we never knew that the load of work was too much for him. That was his uniqueness. Nobody will know that. Meticulous in whatever he does, excellence in whatever he does, self-effacement, ready to serve everybody. Simple living. If there is another word beyond this, we can. Simplest, okay. A small room in this Ramana building where one or two almiras will be there and a chair and a cot. Hardly any space to move about freely. And common bathroom, common lavatory. There, as we enter this corridor, we find there were 3 rooms: first room, second room, third room. Many a times we used to stay in the next second room next to Swamiji's. Same facility, there is no extra facility. So many things, But today, at the same time, he was very deep in his sadhana, very deep, which also nobody knew because his talking was less. Later on only when he wrote, we came to know that it was not that he was observing silence. To him, the all-pervading, indwelling reality was nothing but consciousness. So he was always trying to connect himself with that consciousness. When he sees an object, when he interacts with an object, he was trying to connect this, that everybody is floating in this. Only later on when he wrote, we knew. Never he tom-tommed what he was doing. Today we are going to hear
the wisdom teachings of Swamiji when Premananda, John, when he came here and he conducted an interview. Must have been in late 90s or might be late 90s. Swamiji was relatively in good health. Then he shared with us some of the most sublime teachings. Let us hear what Puja Swamiji says. Sound? Human birth is the gateway to liberation. Now, having taken birth, we are also endowed with intellect. Using the intellect, we find that there is something higher than what the world can give us. We can get only happiness depending upon certain conditions, and that happiness is always followed by sorrow. Now, our intellect tells us there must be something more than this, eternal happiness. And we start trying for it. That is the occasion, that is the turning point in our life to return home. Then the efforts to go back home begins. We come in contact with a wise man who knows the truth. He tells us how to go back. He asks us to meditate on our true being, or any other method that will lead us to our original home. In that process, we purify ourselves. Means our mind gets purified, all those desires are dropped off, all the effects of the desires are dropped off, effects of actions are dropped off, and mind becomes perfectly still. When it is perfectly still, we have a glimpse of our true being. And further effort to remain in that state continuously, we get established in that state, which is our real home, our own self. We go back as naked as we started from there. That is the condition, to shed all that you have earned during your journey. Then we are qualified to enter our home. Can you say something about those tendencies? Tendency means every thought leaves an impression. Every action leaves an impression in our mind. That is why I use the word, we are gathered out of dirt. Every thought, every good thought, every bad thought, every action, good or bad, leaves an impression or layer of dirt in the mind. You can imagine what we had done many years ago suddenly comes to our mind now. It has been there. All those things have to be removed before we can say we have shed all that we have earned during our lifetime. Then only we are absolutely pure, absolutely free or qualified for liberation. For example, when we went to Nityananda's ashram, there are many small caves where you can sit. So the feeling is that it takes many years of hard work to purify the mind. Many years of hard work, definitely. Well, it depends upon how much we had gathered, how much dirt we had gathered. In some cases it is not difficult because they have not gathered much of a dirt. When the dirt is like a mountain, it takes a longer time. First experience is
we have identified ourselves with the Atman, which is all pervading. We are not touched the manifestation. Now we are able to see the entire manifestation is also God Himself in different names and forms. So we identify ourselves with the Atman and the universe. Their goal. And they are one with the entire universe. They are one with everybody. Their love flows towards everybody. If you ask, what is devotion? Yeah, what is devotion? Here our master has taught us devotion is one of the simplest and the safest way to return home. In the beginning, we see the divine or the Supreme Being as separate from us, because we have not understood that we ourselves are that. We think of Him as a personality outside us or as a power outside us and give all our love and devotion to Him. Then we come to understand that He is seated in our own heart. We are not different from Him. And finally, we realize our oneness with Him. So are you saying that in the beginning you must surrender to somebody, the teacher, the guru? To somebody, get guidance from the guru. Who is that guru? One who has become one with the Supreme Being. Because in the West we're a bit nervous to surrender to somebody. Surrender has a different meaning there. The surrender is defeat. If you see, use the word defeat, it is a defeat of the ego in us. The ego disappears. Accepting that I have no power, it is your power that has been working. And I have been claiming wrongly that I am responsible for it. So you're saying that when you deeply surrender to somebody, naturally the ego will fall away. That's right. Somebody means the Supreme Being. That power, He controls the entire universe. To that power we surrender. In a very simple manner, no? Swamiji touches the core of our being by using the word real home. He also used the word that we have to go back, we have to become as naked as we were. What all we have put aside on. Then we try to understand that they are nothing but the rights and wrongs, the likes and dislikes, our cravings, our infatuation, our desire, our ambition, our concepts. All these things, somehow we have gathered, and unless and until we get away from that, we cannot be back to our real home. That word should come back to us often. Whatever sadhana we are doing, we should be able to. If we don't bring that into picture while doing sadhana, we will be still groping on the surface. This has to be very, very clear to us. And the word surrender, defeat of the ego, erasing, erasing the sense of me and mine, which is very difficult because we have built up a powerful entity called this me and mine in us. And when we hear these words, we appreciate intellectually. But the next moment when God puts us on test, in all our dealings, this fellow's supremacy still stays with us.
So when Puja Swamiji used the word defeat, surrender means defeat of the ego. For which we have to remember him always, otherwise how will we? Instead of me and mine, we should know that he who is making the me and mine, me and mine. Me and mine has a role to play, no doubt. It is not that me and mine will go, but it becomes a purified ego. So long as we have got a body, we will continue to have this me and mine. But this me and mine and the other me and mine we all have is totally different. Swami Ranganathananji, I think you have the small eye and the big eye. In his commentaries in Vivek Chudamani, he brings out this. There are two eyes in us, EFGHI, that eye, not EYE. Shankara compares our life of worldliness to a tree. Its seed is ignorance. The notion that I am the body is the first shoot. Attachment is its fine leaves. Our body is the trunk of this tree. The vital forces within are the branches. Our organs are the twigs. All our self-centered activities go to fatten this tree of worldliness, giving us the fruits of miseries and sufferings. The individual soul is the bird on this tree, experiencing everything. Similarly, in Mundakopanishads, we find a picturesque presentation of man's evolution from his life worldliness to that of freedom and immortality. There are two birds on the tree. One on the top is sitting in silent majesty, and the other down is pecking sweet and bitter fruits. Every time the lower bird eats a bitter fruit, it receives a shaking, repents. It expectantly looks at the upper bird, sitting majestically, and moves a little forward. We are like the lower bird, fluttering about the sweet and bitter fruits. We flit about from one object of enjoyment to the other and keep experiencing pleasure and pain, often more pain and little pleasure. We keep chasing them in the hope of getting that little bit of pleasure. This goes on for a long time, say for many lives. Puja Swamiji was talking about that purity, dirt, removing the dirt. Yes. Finally, the lower bird merges in the upper one, realizing that in fact it never existed. All the time what existed was the upper bird only. Similarly, we slowly move towards our higher self. This in brief is the story of man's evolution from his state of creatureliness to that of supreme freedom. These are all nice too. The Mount Everest of spiritual experience comes by proper discrimination between the self and the non-self. First, we have to know what is non-self. One must strive for the discrimination between the individual soul and the eternal soul. Everything comes in a mixed form in our life. We have to sift the real from the unreal. This is the challenge posed to the human intellect. In each one of us, there is an individual self and the eternal self. The individual self is the I, the eternal self is the witness of this I. These are the appearing self and the real self, respectively. There is the I, and there is one who witnesses the I. The individual self is the I. The eternal self is the witness of this I.
Papa, when he was talking about the inward journey, makes it very clear. As soon as the mental chanting starts, fruition of life. Fruition of life कर जा. हैं? In the spiritual journey, going inward is a must. When we sit silently, we have to be conscious in the first place that the God we seek is in our own heart. Is it appearing? Then mentally repeat his name. Now itself we should try, Make the mind repeat the name until all its waves cease and it becomes perfectly still. It does not easily become still. We have to continue the repetition of the name mentally with an attitude of self-surrender. Then he says, we try to develop the witness consciousness. It is a state of awareness of the immortal and radiant truth within us. In fact, this awareness itself is God realization. What Puja Swamiji talked about the real home, you might be remembering the word stillness. To arrive at that stillness, Papa wants us to make use of the chanting, not oral. This vocal chanting should enable us to graduate to a state where mental chanting goes on. Because in mental chanting, we should hear our mental chanting. We become aware of the chanting. We realize the chanting. Then suddenly it becomes clear who is realizing, who is talking. So it paves the way for the emergence of this witness consciousness. That is what has been mentioned by the small eye and the big eye. So the sense of individuality becomes totally convinced that it owes its origin to the top bird,
There are two birds. So how to reach that? Here, the small eye and the little eye. That is our real home. And at the beginning, Puja Swamiji said the human birth is the gateway for liberation. So we should not miss this opportunity. In no other species this privilege is given. Initially, we have been involved in various activities that keep us away from this real home. But every now and then when God makes us to pass through the severest stressful period, we all feel, somehow I have to get peace of mind. We say, we may not say silence or stillness, but normally we say peace of mind. And peace is God. Peace is stillness. Peace is serenity. That is what is aimed at. So the individual self is the I, the eternal self is the witness of this I. That's why we remember this witness conscious. It is also there, not that we have to get it from outside. When by His grace we try to practice this mental chanting, as much as possible mental chanting, then it facilitates for the emergence. We become aware of the presence of the witness consciousness. That moment, Puja Swamiji said, glimpse of our original nature. And the effort is to get stabilized. Is that over? No. Same thing. Same. What is that wonderful reality? We see, at the same time we also see also our act of seeing. We see also our act of seeing. Witness consciousness, We see, and at the same time we see also our act of seeing. That is the witnessing self called Sakshi. This Sakshi has entered even in psychology. The Supreme Self is the witness, witnessing the individual self. We have to discriminate between them and be established in the Supreme Self. It has been beautifully brought out in Adi Shankara's Vivek Chudamani. And in a simple way, Papa puts it. Mental chanting. Mental chanting will pave the way for becoming aware of the witness consciousness. So today, Papa chose to made us to think about all these things through Swamiji's simple words, real home. Let us not forget this word. We have left the real home and we have forgot the way to reach. We remember many years ago when parents had to be shifted to Bangalore. The brother's boss, who came from Paramagudi, brother arranged for him a house in Jayanagar. So one day evening when we happened to be there, he was in an auto, came there, and he said, I have been in the auto rickshaw for more than 1 hour to see my home. I have not been able to locate my home. Will you please help me? He was staying there, but all streets are alike, especially in a place like Jayanagar. All buildings also look the same for a stranger. Unless we familiarize ourselves with that, we will have some landmark, something like that, no number. But this man came and told us, I have been rounding with the auto rickshaw man got really bored. You get down somewhere. So finally, brother said, he took the bike and led him to his own home. So we were, at that time, we were joking, but it was a lesson for all of us. Unless and until we have correct idea about our own home,
We will not, though we started from there, we have lost the way. Exactly it has happened to all of us, or many of us, or most of us. We have left our real home, and after seeing so many things, got fed up with this, and then we want to return to our home, but we don't know how to return. Then we remember this friend's experience. It can happen, yeah. And the world we live in is a school in which observation and experience offer us immense possibilities for self-improvement. So it is not to be just laughed away. There was a learning. Yeah. We are still searching for our own real home. The spiritual preceptors have given us some idea about the home and the path towards it, but still it is not very clear to us. So these two words of Puja Swamiji, we have to somehow get imprinted in our heart. Real home. Trip back to, and first thing is, human birth is a gateway for liberation. It is not the gateway for bondage. It is a gateway for liberation. And second thing is, we have come from the real home. We should know that first. And our effort should be, having played the part, we have to return to our own home. He gave us a role to play outside, but we stayed in the outside without bothering about the real home. So now, through these two words, Puja Swamiji gives us a clear-cut direction of what our life should be. In this Vivek Chudamani, the second sloka, when Swamiji said the human birth is a gateway, in one sloka he says that Durlabam Trayamevai Tad. It is rare of the rarest. These three things are rare of the rarest. Manishyatvam, Mumukshutvam, Mahapurusha Samshaya. Only Devanugraha Hedukam. Only by Devanugraha, only by the grace of God, we get these three. What are the three? One is the human birth. And second is the desire to go back home, no? And the third is the company of evolved souls. Durlabam Trayamevai Tad Devanugraha Hetukam Manishyatvam Mumukshatvam Mahavurusha Samshaya. So whenever we hear Puja Swamiji's words, this sloka also comes to us. Yes, it's a gateway for liberation. We should not miss this opportunity. That is why Papa is arranging programs like this, not for conducting the program. Outwardly we say centenary, some instrumental cause should be there, to ignite our aspiration. So, but the real purpose is that, not to be content with the programs, no. It is a push to our real home. Papa wants every one of us to think about our real home, know about our real home. From those who have scaled and they have returned home. And when we develop, just now we saw the video, last line is abode of bliss. That is our real home. In an understandable way, Papa puts it as objectless happiness. Happiness, we have some idea, some mental, intellectual idea. But it is all attached to, it is dependent on, or it is based on some object, or some situation, or some person. But here it is objectless happiness. Happiness that is full, the bliss. So that is our real home. We have to get back to our real home. We have been drawn by Papa to his ashram and also to various wisdom teachings. And he made us to observe and learn from Puja Mataji and Puja Swamiji. We should not miss this opportunity.
This is the best way of paying our homage to him. He will be very happy, not with anything, They don't want anything. But they will be happy when we have really understood that we are all serious in going back to our real home. So, on this day, we pray to him intensely to somehow enable us to get fixed in this ideal. Because as soon as the program is over, as soon as we get back to our own places, as soon as we get back to our own activities, field of activities, the intensity which we have developed now, it may not be there. Swamiji says about that vasanas, impressions, the leftover, whether it is good or bad, each one leaves a deep dent in our. So that occupies our mind and then makes us to forget about this real home. And the purpose of our life is the journey to the real home. All these things we unknowingly, unwittingly forget. So our prayer is, Papa, you made us to know all these things. Enable us to live up to it. Make it a reality in our life. You have provided everything. Every day you are providing. Not only for the individual existence, but also for reminding us of our ultimate goal to be scaled. Please shower your blessings. You have been showering, but I am not aware of your showering. Make me aware of your showering and grace, so that it is not a journey, it's an awareness. It's an awareness of a realization of our original home that becomes a reality in my life. Hari Om. Today also we had a wonderful forenoon session, afternoon session with bhajans, something about the old days through which so many learnings, and also Puja Swamiji's words of wisdom, something from Swami Ranganathanji's words from Vivek Chudamani. Every day he is giving us, when we do the concreting, you must be knowing that when the mortar, when it is poured, or somebody will be holding something like a rod, and he will do this, wherever this mortar, so that there is no void there, there is no vacuum there. Otherwise the leak will be there. It doesn't get stabilized. So we are hearing so many things. Unless if we do that, outwardly, yes, the mortar is there. And the mortar will become really strong only when the vacuum inside is removed by stirring it. If you watch, that is something for us to learn. 2-3 people with a rod, they will be doing this. Systematically they will do it, so that nowhere anything is left over. So that by the time it gets set, the first 2 or 3 hours it gets set. In 6 hours, more it gets set. And in 24 hours, 80 to 90%. In another 21 days, it gets completely 100% set. But before the setting process starts, we have to do the stirring and to plug all the void there, vacuum there, gap there. So we have heard so many things. We have been provided with so many things. Unless this stirring goes on, it will not get stabilized in us. So we pray to him now. Not merely you should leave us by giving all these things, but enable us to do the stirring by ourselves, so that it gets stamped, concretized, the real concretized in our heart. Hari Om. Something about the Bhajan Sandhya, our Murtiji and party will render. 7 o'clock he will be here. We request all of you to be here by 7 o'clock. It will be a thrilling session.
Chandu can request him once in a way, at least, suppose he's in different languages, to say something about the content so that, we travel with the theme. Not that every word we should understand. Something of it. So if he, just like morning he did like that, it was very, very inspiring for all of us. We have heard this Brocheva Reverura, but we never knew that it was a fervent appeal to the Lord. Without you, who is there for me? If that comes, we will be enjoying the whole journey with him. So similarly, you can request him to give us some, you are here, so that we will be traveling with him. And it will be a wonderful journey for all of us. And then anything else to be, if anything is to be shared tomorrow, we will do it in the morning. We will have bhajan. Bhajan, the bhakti part has to be definitely nurtured, kindled. Otherwise, it becomes dry philosophy, None of us will be able to travel with that. But jnana is necessary. Papa used to say, there you go. Serenity, trust to serenity. I got it. Control end. Papa says, bhakti is the root. Jnana, vairagya is the trunk. Jnana is the flower. Parabhakti is the fruit. So first we start with bhakti because your sense of individuality is there and the power is there. Straight away we cannot jump into the non-dual aspect. Bhakti is the root. So we have to recede from the outer attractions, vairagya, and then jnana. So path of knowledge is very much relevant, very much important. But starts from bhakti, ends in parabhakti. Feeling the whole universe, including us, pervaded by him only. That is the fruit. So in Quest of God, in-depth study revealed this, Again we will read, steps in the spiritual journey, bhakti, devotion to God is the root. Vairagya, withdrawal from the outer to the inner is the trunk. Jnana, feeling the presence of the Atman within, is the flower. Parabhakti, feeling the whole universe, including us, pervaded by him, is the fruit. So, and bhajans help us to touch and kindle, nurture, develop this devotional aspect to a very great extent. Surrender aspect is emphasized by every saint in whoever has composed this. So today bhajan, it is not merely the bhajan program, that is also necessary. Accompaniments have their own relevance. Raga has got its own relevance. But the lyrics also, the Sahitya also got its own important role to play. So today's Bhajan Sandhya program, we will try to take out the maximum benefit from it. Hari Om. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Om. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Om.
Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om 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 Hari Om. இதில் பேஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ரொம்ப, இல்லை இது பூமாக இருக்கு.
Rama 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 Our prostrations, the lotus feet of Sadgurus, Sant and great Vagyakaras of this universe. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Bolo Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Ram. 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 Jai Jai Ram Ram Oh Ram. Jai Jai Ram Ram Ram. Jai Jai Ram Ram Ram. Jai Jai Ram Ram Jai Ram. Jai Ram Ram Ram. Jai 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 Jai Ram Ram Bolo Ram. Jai Jai Ram Ram Ram. Jai Jai Ram Ram Ram. Jai Jai Ram Ram. Jai Jai Ram Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai 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 Ram. Ram. Obeisance to all the great saints, Sadgurus, Jnana Gurus, Kula Gurus, for giving us this wonderful opportunity to sing in a beautiful divine atmosphere created by Sadguru Ramdas Papaji and all his disciples who have maintained the serenity and purity of this ashram and shown us the real path to self-realization. First and foremost, I would like to sing a song created by the composer Sri Purandaradasa, as he is considered to be the Sangeeta Pitamaha, and he was the first person to create Maya Malava Gaula Raga, which we all know, which is taken as the first lesson for singing. This Sadguru, Sant Sadguru, was a great jeweler. He gave everything in dhanam, and finally he took to asceticism. Singing the name of the Lord and having his mudra, Purandara Vitala, he has written 4,75,000 songs, which is supposed to be the highest. If they have a Guinness Book of World Records for composing, I think Purandaradasa will definitely get this Guinness Book of World Record for composing 4,75,000 songs. And it is written how these categories are. There are a lot of Suladis, Uga Bogas, Kirtanas, all comes to 4,75,000 songs. So, as our Sadguru says, even today also we heard, we should be ever immersed in the name.
This is one example of Purandaradasar which I would like to again emphasize. I asked my daughter, if he has made 4,75,000 songs, let us get the calculator and find out how many songs he made in one day. So we started calculating. He lived for 80 years, from 1484 to 1564 in this Vijayanagara, one of the greatest empires of Karnataka. And for 80 years, if we had made 4,75,000 songs, we divided by 80 and divided by 365 days, we got 23.2 or something. So 23 songs he had composed. But I said this is not true, because let us remove 15 years. First 15 years. So taking 65 years for his composing, and we calculate it came to 29.3 or something. So 30 songs per day. That was the greatest revelation for all of us, to know how a person having born in this world can be fully immersed in the name of Vithala. So I now present one of his songs. Treble കുറച്ചിട്ട് ബേസ് മേലെ വെക്കും. ഇതിന് ബേസ് ಕಲಿಯುಗದಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. ಕಲಿಯುಗದಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ, ಮಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. In the Kali Yuga, anybody chanting the name of the Lord, not only he but the next generations, ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು, they all get evolved. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ, ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ. ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ, the easiest path is to chant his name. ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ, ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ. ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ. ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ. ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ. ಓ ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ, ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ. ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ. ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. ಸ್ನಾನವರರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು, ಸ್ನಾನವನರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು. I don't know about dhyana, I don't know about meditation, I don't know about mauna, I don't know about penance, I don't know about being silent, speechless. I don't know, I don't follow any of this. But all that I say is that I chant the name of Vithala.
ಸ್ನಾನವನರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು ಸ್ನಾನವನರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು ಧ್ಯಾನವನರಿಯನೆಂದಲಯ ಬೇಡ ಧ್ಯಾನವನರಿಯನಲಯ ಬೇಡ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ಸಾಮಗಾನ ಲೋಲನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಸಾಮಗಾನ ಲೋಲನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಂತ್ರ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಂತ್ರ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ತಂತ್ರ. ಮಂತ್ರವನರಿಯೇನು ತಂತ್ರವನರಿಯೇನು ಮಂತ್ರವನರಿಯೇನು ತಂತ್ರವನರಿಯೇನು ಯಂತ್ರವನರಿಯನೆಂದಲಯ ಬೇಡ ಯಂತ್ರವನರಿಯನೆಂದಲಯ ಬೇಡ ಯಂತ್ರವನರಿಯನೆಂದಲಯ ಬೇಡ ಯಂತ್ರವನರಿಯನೆಂದಲಯ ಬೇಡ ಸಂತತ ಸಂತತ ಧ್ಯಾನಾನಂತನ ನಾಮವ ಸಂತತ ಧ್ಯಾನಾನಂದನ ನಾಮವ ಸಂತತ ಧ್ಯಾನಾನಂತನ ನಾಮವ ಸಂತತ ಧ್ಯಾನಾನಂದನ ನಾಮವ ಚಿತ್ತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚಿಂತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆನೆ ಮನವೇ ಚಿಂತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆನೆ ಮನವೇ ಚಿಂತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆನೆ ಮನವೇ ಚಿಂತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಜಪ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ತಪ. ಜಪವೊಂದರಿಯೇನು ತಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ಜಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ತಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ಜಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ತಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ಜಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ತಪವೊಂದು ಅರಿಯೇನು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನಲಯ ಬೇಡ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನಲಿಯ ಬೇಡ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ 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 ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಓ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಓ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಓ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ 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 ಪುರಂದರ ಓ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ಓ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಓಹೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅಪಾರ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಉಪಾಯವಿಂದಲೀ ನೆನೆ ಮನವೇ ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ನೆನೆ ಮನವೇ. So finally Purandaradasa says upayavilla. There is no other method, there is no other path. Upayavindali nene manave. So kindly maname chant the name of Purandara Vithala. Upayavindali nene manave. ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ನೆನೆ ಮನವೇ. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು. All of you can join this very very simple Namavali. Namo Narayana, Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, Namo Narayana, ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, Om Namo Narayana, ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, Om Namo Narayana, ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, Namo Narayana, ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ನಾರಾಯಣ, ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ನಾರಾಯಣ, ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ನಾರಾಯಣ, ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ನಾರಾಯಣ, ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ನಾರಾಯಣ, ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ನಾರಾಯಣ, ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ನಾರಾಯಣ, ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ನಾರಾಯಣ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾರಾಯಣ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾರಾಯಣ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾರಾಯಣ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ನಾರಾಯಣ, ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ನಾರಾಯಣ, ಓ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ನಾರಾಯಣ, 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 ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ನಾರಾಯಣ, ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ನಾರಾಯಣ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ಓಂ ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ 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 ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ಓಂ ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ 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 ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಹರೇ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಓಂ ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ 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 ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ, ಹಾ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಹರೇ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ,
Narayana Narayana Hari Hari Narayana Narayana Hari 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 Narayana Narayana Hari 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 Narayana 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 Narayana. Tyagaraja, Saint Tyagaraja. He had wonderful experience with Lord Sri Rama. One of the most important incidents in his life, and how he composed one of the famous kritis. It was the wedding day of his daughter. They were all gathered. As you all know, Tyagaraja was a Saraswati Avatara, we say. There was not much of Lakshmi with him. So he was a very popular, but at the same time, very humble life he led, unlike other saints. During the wedding day, many of his disciples, Shishakotis, they were all coming with lots of Sheer Varisha, we call it, sweets, laddus, jalebis, everything. Each one brought from their house something for the Guru's daughter's wedding. And there was one Shishya who was very talented in painting. So that was around Muhurta time, everybody had come. And one of his disciples told, Swami, somebody is coming there for you. There is a big painting of Rama, Sita, Lakshmana in the Pattabhisheka column. And it was a big painting, so no one person could hold it. So there were about 4 or 5 of them. They were holding it and bringing it towards Tyagaraja's house. He came out and saw. He could see Rama walking for this wonderful function, and he composed Nannu Palimpa Nadachi Vachitivo. Nannu Palimpa Nadachi Vachitivo means, oh Rama, just to protect me, are you walking all the way from there? Na Prananatha Nannu Palimpa Nadachi Vachitivo 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 Nannu Palimpa Na Prananatha Rama Na Prananatha Rama Na Prananatha Rama Na Prananatha Rama Rama Nannu Palimpa Nadachi Vachitivo. Next I see Dikshidhar, Muthuswami Dikshidhar. It's a great Devi Bhakta who went to Varanasi
he got his guru there, and it is said that he got a lot of knowledge, bhakti, vairagya and jnana, what Swamiji was telling in the morning. Through bhakti, he got vairagya. Through that, he got jnana. He had composed innumerable kritis in Sanskritam, Telugu. So out of that, I have chosen today. He talks about Shiva and Shakti, or the Ardhanarishwara. He propitiates the form through music. It's in a very rare ragam called Kumuda Kriya. चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्द्र शरीरकाय चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय अर्धनारीश्वरम् अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अत्रिभृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्री अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अत्रिभृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्री अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अत्रि भृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्री अर्धनारीश्वरम् अर्धयामलङ्कार विशेष प्रभावम् अर्धयामलङ्कार विशेष प्रभावम् अर्धयामलङ्कार विशेष प्रभावम् अर्धयामलङ्कार विशेष प्रभावम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अभयकरं शिवम् अर्धनारीश्वरम् अर्धयामलङ्कार विशेष प्रभावम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अभयकरं शिवम् अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अत्रिभृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्री अर्धनारीश्वरम् अर्धनारीश्वरम् नागेन्द्र फणिपूजितं नागेन्द्र फणिपूजितं नागेन्द्र फणिभूषितं नागेन्द्र फणिभूषितं
பணிபூஷிதம் நாகேந்திர பணிபூஷிதம் நாகேந்திர பணிபூஷிதம் நந்தி துரக ஆரோகிதம் 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 ஸ்ரீ குரு குக பூஜிதம் ஸ்ரீ குரு குக பூஜிதம் ஸ்ரீ குரு குக பூஜிதம் குமுத கிரியாராகனுதம் ஸ்ரீ குரு குக பூஜிதம் குமுத கிரியா ராகனுதம் ஸ்ரீ குரு குக பூஜிதம் குமுத கிரியாராகனுதம் ஸ்ரீ குரு குக பூஜிதம் குமுத கிரியா ராகனுதம் ஆகமாதி சன்னுதம் ஆகமாதி சன்னுதம் 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 ஆகமாதி சன்னுதம் 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 ஆகமாதி சன்னுதம் 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 ஆகமாதி சன்னுதம் 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 ஆகமாதி சன்னுதம் அனந்த வேத கோஷிதம் 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 அமரேஷாதி சேவிதம் ஆரக்தவர்ண சோபிதம் அமரேஷாதி சேவிதம் ஆரக்தவர்ண சோபிதம் அமரேஷாதி சேவிதம் ஆரக்தவர்ண சோபிதம் அமரேஷாதி சேவிதம் ஆரக்தவர்ண சோபிதம் ஆகமாதி சன்னுதம் அனந்த வேத கோஷிதம் அமரேஷாதி சேவிதம் ஆரக்தவர்ண சோபிதம் அர்த்தநாரீஸ்வரம் ஆராதயாமி சததமத்ரி பிருகுவசிஷ்டாதி முனிவృంద வந்திதம் ஸ்ரீ அர்த்தநாரீஸ்வரம் சனிதமகரி சரி ஆகமாதி சன்னுதம் கமதமகரி சரி ஆகமாதி சன்னுதம் சதனி நிதமகரி ஆகமாதி சன்னுதம் திரிசசனி ததமகரி ஆகமாதி சன்னுதம் சரி கமத சனிதமகரி ஆகமாதி சன்னுதம் சனிதனி தமதமக சரிக ஆகமாதி சன்னுதம் தத சரி ரிக கம தத ஆகமாதி சன்னுதம் ஆகமாதி சன்னுதம் ಗರಿ ಮಗದ ಮಸ ನಿರಿಸ ಗರಿ ಮಗರಿ ಸನಿದ ಮಗರಿ ಸರಿಗ ಆಗಮಾದಿ ಸನ್ನುತಂ ಮಗರಿಗ ಗಮ ಗಮ ರಿಗ ಆಗಮಾದಿ ಸನ್ನುತಂ ಸನಿ ನಿದದ ಮನಿದದ ಮಮ ಗಮ ದಮ ಗರಿ ಮಗ ಗರಿ ಸರಿಗ ಆಗಮಾದಿ ಸನ್ನುತಂ ಸನಿ ನಿದದ ಮನಿ ನಿದದ ಮಗ ಮಮ ಮಗ ಆಗಮಾದಿ ಸನ್ನುತಂ ಗಗ್ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗಮ ಗರಿ ಸರಿಗ ಗ ಗ ಗ ಗಮ ಗಮ ಗಮದ ಗಮ ಗಮ ಗರಿ ಗಮ ಗರಿ ಗಮ ಗರಿ ಸರಿ ದಾರಿ ತಕಿಟ 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 ಗಮ ಗರಿ ಗಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗಮದ ಮಗರಿ ಗಮದ ಮಗರಿ ಗಮದ ಗಮ ಗಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗಮದ ಮಗರಿ ಗಮದ ಗಮದ ಮಾದ ಸರಿ ದ ಸಿರಿ ಗರಿ ಸರಿ ದ ಸರಿ ಗರಿ ಗರಿ ಸರಿ ದಾದ ಸರಿ ರಿ ಗ ಮಮ ಗರಿ ರಿ ಸಾಗರಿ ಸದಾರಿ ಸರಿ ದಾಸರಿ ದಮನಿ ದಮ ಗನಿ ದಮ ಗಮ ಗರಿ ಆಗಮಾದಿ ನುತಂ ಅನಂತ ವೇದ ಘೋಷಿತಂ ಅಮರೇಶಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಆರಕ್ತವರ್ಣ ಶೋಭಿತಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧಯಾಮಿ ಸತತಂ ಅತ್ರಿ ಭೃಗು ವಸಿಷ್ಠಾದಿ ಮುನಿ ವೃಂದ ವಂದಿತಂ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧಯಾಮಿ ಸತತಂ ಅತ್ರಿ ಭೃಗು ವಸಿಷ್ಠಾದಿ ಮುನಿ ವೃಂದ ವಂದಿತಂ
अर्धनारी ईश्वरम् There are so many births in this universe. Of that, the human birth is supposed to be considered as the most luckiest and auspicious compared to other births. For this, Oothukadu Venkata Subbayar, a 500-year-old composer, saint composer, he has beautifully explained in his song, Kshanameva Ganyam Manni Purva Punyena Sri Krishna Anusmarana Kshanameva Ganyam Manni Gunagana Bhajana Vaibhava Ashrita Govinda Madhusudana Iti Kshanameva Ganyam Manni. He says, if today we say the name of Rama, even utter one word, it is because of our ancestors, not because of our smartness. Purva Punyena Sri Krishna Anusmarana. Those people have said so many times Rama Nama, Krishna Nama, Vittala Nama. Because of those pure souls, today we are able to spend some time in the name of Ramanama. Let us experience this song. Sashankachakram Sakireetakundalam Sapitavastram Sarasiruhekshanam Saharavakshasthala Shobhikaustubham Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam Shirasa Chaturbhujam Kshanameva Ganyam Manye Takshanameva Ganyam Manye Takshanameva Ganyam Manye Takshanameva Ganyam Manye Purva Punyena Sri Krishna Anusmarana Kshanameva Ganyam पुण्येन श्री कृष्ण क्षणमेव गण्यो मन्ये पूर्वपुण्येन श्रीकृष्णानुस्मरण क्षणमेव गण्यो मन्ये पूर्वपुण्येन श्रीकृष्णानुस्मरण क्षणमेव गण्यं मन्ये गुणगान भजन गुणगान भजन गुणगान भजन 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 गुणगान गुणगान भजन वैभव आश्रित गुणगान भजन वैभव आश्रित गुणगान भजन वैभव आश्रित गुणगान भजन वैभव आश्रित हरि गोविंद मधुसूदन हरि गोविंद हरि गोविंद मधुसूदन हरि 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 गोविंद मधुसूदन
हरि 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 गोविंद मधुसूदन हरि 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 गोविंद मधुसूदन हरि 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 गोविंद मधुसूदन हरि 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 गोविंद मधुसूदन हरि 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 गोविंद मधुसूदन नाम घोषित गोविंद मधुसूदन नाम घोषित गोविंद मधुसूदन नाम घोषित गोविंद मधुसूदन नाम घोषित तत्क्षणमेव गण्यं मन्ये पूर्वपुण्येन श्रीकृष्णानुस्मरण क्षणमेव गण्यं मन्ये नीलरूपेण रञ्जित 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 नीलरूपेण रञ्जित कोमल निर्मल पदयुग नूपुर गल्गल 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 लोलवुरस्तर कौस्तुभमणिधर 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 मुखधरस्मिक रश्मिक रस्मरण मुखधरस्मिक रश्मिक रस्मरण मुखधरस्मिक रश्मिक रस्मरण मुखधरस्मिक रश्मिक रस्मरण लोलवुरस्तर कौस्तुभमणिधर मुखधरस्मिक रश्मिक रस्मरण लोलवुरस्तर कौस्तुभमणिधर मुखधरस्मिक रश्मिक रस्मरण क्षणमेव गण्यं मन्ये पूर्वपुण्येन श्रीकृष्णानुस्मरण क्षणमेव गण्यं मन्ये सारसासन सनक सनन्दन सुजन गणादि विनुत नट नर्तन 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 कोमल पद बृंदावन विहरण गोप गोपिका जीवन स्मरण कोमल पद बृंदावन वितरण गोप गोपिका जीवन स्मरण सारसासन सनक सनन्दन सुजन गणादि विनुत नट नर्तन 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 कोमल पद बृंदावन विहरण 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 गोप गोपिका जीवन स्मरण गोप गोपिका जीवन स्मरण
गोप गोपिका जीवन स्मरण गोप गोपिका जीवन स्मरण सारसासन सनक सनंदन सुजन गणादि विनुत नटन तन कोमल पद वृंदावन विहरण गोप गोपिका जीवन स्मरण क्षणमेव धन्यं मन्ये पूर्व पुण्येन श्री कृष्णानुस्मरण क्षणमेव गण्यं मन्ये पूर्व पुण्येन श्री कृष्ण अनुस्मरण क्षणमेव गण्यं मन्ये कृष्ण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण गोप गोपी रमण जय गोप वृंद जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा राधा रमण 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 राधा राधा रमण राधा रमण रमण Next, I would like to present a composition of Sriman Narayana Tirtha, who was a resident of a place called Varahur. It was changed later after his avatara of Lord Krishna. Narayana Tirtha was a great saint and composer, great bhaktiman of Lord Krishna. He wanted to leave this universe and merge at the lotus feet of Lord Narayana. He was always complaining that he is not being taken away from this universe. So one day in his dream, he saw Lord Narayana and he said, tomorrow I'll give you a darshanam. He wanted basically darshanam, then after that he wanted to go to the Vaikuntha. He says, if I don't have the body, how will I have my darshanam? Without the eyes, without the senses, I can't. So, Lord Narayana comes in his dream and promises, tomorrow you will definitely see me. With this, Narayana Tirtha is very, very happy, joy, excited. He goes to the pond, takes his morning bath, comes with Vaishnava Chinnhas, goes to the temple in Varahur, comes back. He is unable to understand when is he going to get the darshanam. But he is waiting. He said, Lord has promised me, I will definitely wait. As he was walking in the road, suddenly he found a pig full of dirt running, just facing him from far. As it came very, very near him, he was about to dash him. He said, chi, 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 po, po, he said. And it went away. It didn't go on the wrong direction. It ran in such a way, it went into the agraharam of a person who was a devotee of Krishna and went in. Narayana Tirtha, he just ran away. Ran after him and found that he is entering into a house. And they say there used to be a Machimugal in Kerala, in most of the styles, there used to be a first floor. There is the Lord
where he does the puja, one of the bhaktas. There the pig goes and it vanishes into thin air. Then he understood, Swami has come in Varaha Avatara. I missed it. But he saw Swami and he has prayed for the kshema of the loka. He knew that Corona would come, so he prayed then itself. So he always used to sing. Kshemam kuru gopala santatam mama kshemam kuru gopala kshemam kuru gopala santatam mama kshemam kuru gopala santatam loka kshemam Kuru Gopala Santatam Mama Kshemam Kuru Gopala Loka Kshemam Kuru Gopala Santatam Mama Kshemam Kuru Gopala. As Swami said, Kamam should be there. For what? Tava pada kamala brahmari bhavatu. Just like a beautiful bee that goes in search of the nectar in a flower, I should have that desire. Kamam tava pada kamala brahmari bhavatu. Kamam tava pada kamala brahmari bhavatu. Kamam tava pada kamala Brahmari bhavatu kamam tava pada kamala brahmari bhavatu. Brahmari bhavatu 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 Brahmari bhavatu Brahmari bhavatu. Brahmari bhavatu Brahmari bhavatu. Kamam tava pada kamala Brahmari bhavatu Kamam tava pada kamala brahmari bhavatu. Sriman mama manasam Madhusudana Sriman mama manasam Madhusudana Sriman mama manasam Madhusudana Sriman mama manasam Madhusudana Shrimam Kuru Gopala Santatam Mama Shemam Kuru Gopala Santatam Mama Shemam Kuru Gopala Ajita Vijaya Gopala Gopala Ajita Vijaya Gopala. Ajita Vijaya Gopala Anandagana Ranjita Pada Kamala Ajita Vijaya Gopala Anandagana Ranjita Pada Kamala Vijaya Dwarakapuri Vimala Kamala Lola 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 Nij Narayana Tirtha Nirmalananda Bala Nij Narayana Tirtha Nirmala Ananda Bala Nij Narayana Tirtha Nirmala
निर्मलानंद बाला निज नारायण देव निर्मल आनंद बाला क्षेमं कुरु गोपाला संततं मम क्षेमं कुरु गोपाला संततं मम क्षेमं कुरु गोपाल 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 Brahmanand, Sant Brahmanand. He brings out a beautiful concept. There are a lot of people who like to advertise and publicize themselves about having done so much in this temple, having done Annadanam, having sponsored this, that. They would like to very beautifully say it in the public without any hesitance. To them, he says, प्रभु तेरो महिमा किस विध गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं. Oh Prabhu, hey Lord Rama, Krishna, I can't see the end. I can't see the start. Just like this Brahma and Vishnu, who were about to see the feet and the Shiras of Lord Shiva, and they couldn't find it. Same way, तेरो अंत नहीं पाऊं, अलक निरंजन रूप तुम्हारो कैसे ध्यान लगाऊं. You got so many forms. How will I meditate? वेद पार अजहू नहीं पायो, कैसे मैं बतलाऊं तेरो महिमा. I have not studied Vedas, I have not studied Upanishads. I don't know anything about the universe. How will I be able to praise you? Then he comes to the main point. Ganga Jamuna Neer Bahayo Manjan Kim Karvamu. Oh Lord, I think that I am doing the Abhishekam for you with the milk and all those things. I don't do it. It is because of you. It is because of all those wonderful things that you have created in this world, through which I am able to get the happiness of doing an Abhishekam. I can't create milk. I can't create water. So, how will I do with all those things that you have created to yourself? So, what is there for me? He says, the entire garden of flowers are created by you. Vriksha bagiche rachna tero. How will I do that? Archana, yaar, it is not mine. The flowers I cannot own. How can I do that? It is all yours. And he says, finally, if somebody has got the ego, he says, to remove that, to annihilate that ego, he says, remove this ego in me so that gat darshana paun. Brahmanand, tu mitha de ye bhadata, badapan, this is bhadata, that ego in me, so that gat darshana paun. Every time I keep seeing you. Prabhu tero mahima kis vid gaun, tero ant kahin nahi paun. प्रभु तेरो महिमा प्रभु तेरो सर கொஞ்சம் எக்கோ கொடுக்கணும் प्रभु प्रभु तेरो महिमा किस विध गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं.
प्रभु तेरो महिमा किस विध गाऊं, 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 तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, 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 प्रभु तेरो महिमा वेद पार अजहू नहीं पायो, 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 मैं कैसे बतलाऊं तेरो महिमा, मैं कैसे बतलाऊं तेरो महिमा, मैं कैसे बतलाऊं प्रभु तेरो महिमा किस विध गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, प्रभु तेरो महिमा गंगा जमुना नीर बहायो, 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 निसा नि द प म ग रि सा नि सा ग म प नि सा ग रि सा नि द प म ग रि सा नि सा ग म प गंगा जमुना मम प मम प म प ग म ग प म द प प म प ग म प नि सा नि द प म द प म ग रि सा नि सा ग म प सा ग म प सा ग म प गंगा नि द प म प नि द प म प म प म प सा नि द म प सा नि द प म ग ni da ba ma pa ni da ba ma ga ma pa sa ni da ba pa sa ni da ba ma da ba ma ga ma pa ni sa ga ni sa ni da ba ma ga ri sa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa गंगा जमुना नीर बहायो मंजन किम करवा प्रभु जी गंगा जमुना नीर बहायो मंजन किम करवाऊं हे प्रभु जी, वृक्ष बगीचे रचना तेरो, वृक्ष बगीचे रचना तेरो, वृक्ष बगीचे रचना तेरो, वृक्ष बगीचे रचना तेरो, वृक्ष बगीचे रचना तेरो। कैसे पुष्प चढ़ाऊं प्रभु जी, वृक्ष बगीचे रचना तेरो, मैं कैसे पुष्प चढ़ाऊं। गंगा जमुना नीर बहायो
मंजन किम करवाऊं, हे वृक्ष बगीचे रचना तेरो, कैसे पुष्प चढ़ाऊं। वृक्ष बगीचे रचना तेरो, वृक्ष बगीचे रचना तेरो, वृक्ष बगीचे रचना तेरो, वृक्ष बगीचे रचना तेरो, कैसे पुष्प चढ़ाऊं प्रभु जी, कैसे पुष्प चढ़ाऊं रे प्रभु जी, मैं कैसे पुष्प चढ़ाऊं प्रभु जी, कैसे पुष्प चढ़ाऊं प्रभु जी, कैसे पुष्प चढ़ाऊं, कैसे पुष्प चढ़ाऊं, कैसे पुष्प चढ़ाऊं, हाँ कैसे पुष्प चढ़ाऊं, प्रभु तेरो महिमा किस विध गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। प्रभु तेरो महिमा, प्रभु तेरो महिमा, प्रभु तेरो महिमा। अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायण जगव्यापका जनार्दना आनंदघना अविनाशा सकळ देवादिदेवा कृपाळुवाजी केशवा महानंदा महानुभवा सदा शिवा सहज रूपा तुकाल लोटांगणी मजठाव ध्यावाजी चरणी हेची करीतसे विणवणी भवबंधनी सोड भावे. This is a Pasayadan form of shloka which Tukaram Maharaj has written, where he sees Vishnu in different forms. Shri Ananta Madhusudana Padmanabha Narayana Jagavyapaka Janardana Anandaghana Avinasha Sakala Devadi Deva. You are the God of all the gods, the greatest God. Sakala Devadi Deva Kripaluvaji Keshava Mahananda Mahanubhava Sadashiva Sahajarupa. You're also Lord Shiva. You assume the Lord of Shiva and Vishnu. Tuka ala lotangani. Tukaram Maharaj says, I
there is a form of worship where Lotangani is Anga Pradakshanam. Anga Pradakshana, yes. So I come to you surrendering my body, doing Anga Pradakshana. Tuka ale Lotangani maza thava dhyavachi sharani. My mind is always surrendered and stuck at your feet. Maza thava dhyavachi sharani. Hechi karita se vinavani. I appeal, I request you. Bhava bandhani sodhavave. I request you to just break all the material desires, my material attachments with this world, and just sharanagati at your feet. And that is the essence of this shloka. Adi Shankara, when he went to Pandharpur, he had written Panduranga Ashtakam. Very, very commonly sung. But he has brought this Shiva Vishnu Rupa Aikyam. Mahayoga Pithe Tate Bhrimaratyam Varam Pundalikaya Datum Munindrahi Samagatya Tishtantamanandakandam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam. Parabrahmalingam. There was a time when there were a big commotion in the Bhakti field where Shaivites and Vaishnavites, they were two different parts. So there was one such Shaivite in Pandharpur itself, the same street of where Panduranga's temple was there. It's a very strange Shaivite. Used to do Rudra Chamakam, Abhishekam and everything. After that, he used to go to the Shiva temple, come back and have his food. Again evening, used to go to the Shiva temple, come back. He never ever entered Panduranga's temple because he was a Veera Shaiva. And he felt it was below his dignity to enter Panduranga's temple because he's Vaishnava. Such was this great man. And his profession was a jeweler, ornament maker, goldsmith, yes. So there was an incident, it is being said by many saints, we have heard it, Sravanam. There was one family which never had child. So that those couple, they went to Panduranga and bowed and said that we will give you the Udhyana in your waist, make a gold Udhyanam for you if you bless us with a child. Within 1.5 years, they were blessed with a child. Now, the father of the child goes to this goldsmith and says, hey, Narahari, his name is Narahari Sonar. Narahari Babu, please make a small ornament for me. He said, yeah, definitely. Give me, what is it to be done? He said, Udhyanam. For whom? He says, for Panduranga. Panduranga. So, how to do it? He said, you come and take the measurement. He said, I will never enter the temple. What to do? Then he says, you only go, take a measurement and take a small cloth, tie it and bring it back. I'll make that ornament for you. The father of this child goes, asks this pujari to make a small cloth and tie it around the waist of Panduranga, brings it exactly and gives to this goldsmith Narahari Sonar. He makes it after 1 week. He says, please come and take it. They come and collect the gold ornament and they go to the temple. When they go to the temple, he gives to the pujari. The pujari is, with great devotion, takes this ornament and it's being placed at the hip of Panduranga. It is loose, it just falls down. Really? What a miracle. We took the measurement, but how come it is so loose? He goes back. He tells Narahari Sonar, sir, this ornament is not at all correctly measured, I think. Something went wrong. It is loose and it is extra. So, okay. Again he goes, again they take and comes back. This time he again makes another thing, it is very tight.
So they are not able to see to it that the ornament is worn or adorned in the idol of Panduranga. So finally they say, Narhariji, aap hi aiye. You only come and take the measurement with your own hand, then only it will, I think, work out. He said, I will not come, definitely not. Say, why? I don't want to see Panduranga, I only want to see Shiva. Oh, is that so? So we'll do one thing, we'll blindfold you. You enter, we'll take you inside the temple. You take the measurement, you come back. You don't have to see Panduranga, na? It's very easy. So he says, okay, fine. Okay, fine. He agrees to that. And finally he goes, he enters the temple, they all take him out. And they say, come on, you place your hand. And the moment he places his hands, it was on his Shiras of Panduranga. And to his surprise, it is like a Shivalinga. If you have seen the Panduranga, it's like a Shivalinga at the Makuta. There's no Kiritam. Makuta is like a Shivalinga. He starts crying. All these days I didn't see you. You are also Shivalinga. So this is how Adi Shankara says, Parabrahma Lingam Bhaje Pandurangam. Parabrahma Lingam Bhaje Pandurangam. I'll sing the very popular Sundarate Dhyana Ibhoye Vitevari, Tukaram Abhanga. This will be the concluding song for today's session, for which we are indebted to Swami Ramdas Papa, Krishna Bai, Muktananda Swamiji, and all the gurus who have blessed us all these years, and the wonderful silent audience whom we have been very, very grateful to all of you, each and every one of you. Thank you. This is my wife Mangalam. She's my sister like Jayanti, Jyoti, and Anil. This is my father's granddaughter. Kirtana is her name. Sundarate Dhyana Ubhe Itevari. You are the one with a beautiful form standing on the brick. Itevari. Karakatavari Tevuniya, with your hands folded in the hips. Makara Kundala Talapati Sravani. It is sparkling with the diamonds of Makara Kundala. Talapati Sravani. Kanti Kaustubhamani Virajita. In your neck is a beautiful Kaustubhamani. Gala Tulasi Hara Kase Pitambara. Beautiful silk dhoti. Gala Tulasi Hara, Tulasi Mala, Kase Pitambara. Avade Nirantara Hechidana. I love this beautiful form. All these three lines are on Panduranga, but the fourth line, he says, Tuka Mani Maze. Hechi Sarvasukha. These are all my happiness, seeing you. Pahina Sri Mukha Avadine. Here he says about Sri. Sri is Rukamani. If at all anybody goes to Pandharpur, please do a Lakshmi Ashtotra Puja, which they do for Lakshmi on the backside of Panduranga. It is very auspicious, very, very helpful for the life. We have done that. We have experienced that Lakshmi Ashtotra Puja. They'll give a small plate and ask you to pour kunkumam with the Ashtotra. They keep on saying that. Tukamani Maje Hechi Sarvasukha Pahina Sri Mukha Avadina. Sundarate Dhyana Ubheitevari. Sundarate Dhyana Ubheitevari. Karakatavari Teuniya. Karakatavari Teuniya. Makara Kundala Talapati Sravani. Makara Kundala Talapati Sravani. Kanthi Kaustubhamani Virajita. Kanthi Kaustubhamani Virajita. Gala Tulasi Hara Kase Pitambara. Gala Tulasi Hara Kase Pitambara. Gala Tulasi Hara Kase Pitambara. Tulasi Hara Kase Pitambara. Aade nirantara hechi dhyana. Aade nirantara hechi dhyana. Aade nirantara
निरंतर हेची ध्यान आवडे निरंतर हेची ध्यान तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख 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 तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख 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 हेची सर्व सुख हेची सर्व सुख हेची सर्व सुख हेची सर्व सुख सुंदर ते ध्यान सुख सुंदर ते ध्यान सुख मकर कुंडल सुख मकर कुंडळ सुख मकर कुंडल सुख मकर कुंडळ सुख तुळशी हार सुख तुळशी हार सुख काशे पितांबर सुख कासे पितांबर सुख काशे पितांबर सुख कासे पितांबर सुख कौस्तुभमणी सुख कौस्तुभमणी सुख पंढरपूर सुख पंढरपूर सुख चंद्रभागे स्नान सुख चंद्रभागे स्नान सुख अभंग कीर्तन सुख अभंग कीर्तन सुख संत समागम सुख संत समागम सुख विठ्ठल कीर्तन सुख विठ्ठल कीर्तन सुख ओ पंढरपूर सुख पंढरपूर हेची सर्व सुख 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 तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख सुख पाहिन श्रीमुख आडीन पाहिन श्रीमुख आवडीन ओ पाहिन श्रीमुख आवडीन ओ पाहिन श्रीमुख आवडीन Let's all join saying the name of the Vittala. Jai Jai Vittala Jai Hari Vittala. Hey. जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला Jai Jai Vittala Jai Hari Vittala. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला Jai Jai Vittala Jai Hari Vittala. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला Jai Jai Vittala Jai Hari Vittala. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला Jai Vittala Jai Hari Vittala. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला Jai Jai Vittala Jai Hari Vittala. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला Jai Jai Vittala Jai Hari Vittala. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला Jai Jai Vittala Jai Hari Vittala. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला जय जय विठ्ठल जय हरि विठला. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला बोलो जय जय विठ्ठल जय हरि विठला. विठला विठल 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 विठ्ठल 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 विठला विठ्ठल विठल 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 विठला. विठ्ठल 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 विठला विठल 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 विठला. विठ्ठल 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 विठला विठल 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 विठला. विठ्ठल 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 विठला विठल 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 विठला. विठ्ठल 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 विठला विठल 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 विठला. विठ्ठल 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 विठला विठल 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 विठला. विठ्ठल 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 विठला विठल 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 विठला. विठ्ठल अरे विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल जय हरि विठला. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला जय जय विठ्ठल जय हरि विठला. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला जय जय विठ्ठल जय हरि विठला. जय जय विठ्ठल जय हरि विठला. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला जय जय विठ्ठल जय हरि विठला. We would just add a small song. There is a beautiful song of Tyagaraja which is a Shodashopachara with the body. Before that, Anantarama wanted me to sing Irevanenge Irukindran of Haridas Giri. இறைவன் எங்கே இருக்கின்றார்? இறைவன் எங்கே
இருக்கின்றான். இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான்? இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான்? இப்பொழுதென்ன செய்கின்றான்? இப்பொழுதென்ன செய்கின்றான்? மறைகள் தோன்றியது அப்போது, மறைகள் தோன்றியது அப்போது, அந்த மாயவன் தோன்றியது என்னாளோ? மாயவன் தோன்றியது என்னாளோ? இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான்? அவன் இப்பொழுதென்ன செய்கின்றான்? மறைகள் தோன்றியது அப்போது, அந்த மாயவன் தோன்றியது என்னாளோ? இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான்? பாலுக்குள் வெண்ணெய் இருப்பது போலே அந்த பரமன் பதவி இருப்பதனாலே, பாலுக்குள் வெண்ணெய் இருப்பது போலே அந்த பரமன் பரவி இருப்பதனாலே, இந்த பாலில் வெண்ணெய் கிடக்கும் வழி தன்னை, பாலில் வெண்ணெய் கிடைக்கும் வழி தன்னை பரமன் செய்வது என்னாளோ? பரமன் செய்வது என்னாளோ? இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான்? இப்பொழுதென்ன செய்கின்றான்? இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான்? கோபிகள் கோகுலத்தில் கொண்ட தாபம் போதாதென்று, கோபிகள் கோகுலத்தில் கொண்ட தாபம் போதாதென்று, கோபாலனே இன்னும் ஏதும் பாகியம் உண்டோ? கோபாலனே இன்னும் ஏதும் பாகியமுண்டோ? பாக்கி உண்டானால் ஏதேனும் பகர்ந்து விடு, பாக்கி உண்டானால் ஏதேனும் பகர்ந்து விடு. காந்து நின்று பரிதவிக்கும் என்ற நாவல் புரியவில்லையோ? பரிதவிக்கும் என்ற நாவல் புரியவில்லையோ? இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான்? இப்பொழுதென்ன செய்கின்றான்? இறைவன் எங்கே? இறைவன் எங்கே? இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான்? One last song of Tyagaraja, if you would like to sing. It's a beautiful concept of Shodashopachara. Paripalaya, paripalaya, paripalaya Raghunatha. Paripalaya, paripalaya, paripalaya Raghunatha. Save me, O Lord Rama, is what Sri Tyagaraja says. Paripalaya, paripalaya, paripalaya Raghunatha. This body, in this body you dwell. This is the temple where you dwell. This body of mine is a temple where you dwell. Tanuve nee kanuvaina sadamaura. Your southern
is this temple, which is my body. Sthirachittamu varachamikara Raghunatha. Sthirachittamu. The mind is always wavering normally, and when you want to fan the Lord, you fan the Lord with that sthirachittam. So there is not a simile, the opposite which is happening. Sthirachittamu varachamikara Raghunatha. Supada Dhyanamu Ganga Jalamaura. I pray your feet. I cleanse your feet with the Ganga Jala. What is the Ganga Jalam? Is my Supada Dhyanam. I place my Dhyanam on your feet, and that is the Ganga Jalama. Jalam Abhishekam which I do to your feet. Ibha Palaka Abhimanamu Shubha Chelamu Raghunatha. You please do all the good. Spread all the goodness on this earth, Raghunatha. Ibha Palaka, you are the protector of this world. Shubha Chelamu, please protect this world, Raghunatha. Dana Kirtini Jalaka Vasana Gandhamu. Dana Kirtini Balaka Vasana Gandhamu Raghunatha. The Gandham which I apply to your forehead is the Kirti which I sing in your praise, is the Gandhamu which I offer to you, Raghunatha. Harinama Smaranamu Virulaura Raghunatha. Toli Dushkrita Balamella Guggula Dupamu. All my previous births' sins get waded away by when I give the Gukula Dupam to you, Raghunatha. Nipada Bhakte Bro. Let my sins evaporate as I burn the incense sticks for you. Let it be the Gugula Dupam. May the sins be the Gugula Dupam. Nipada Bhakte Brotu Deepambamu. The bhakti which I offer to you is the Deepam, the Deepa Radhanai which I offer to you, Raghunatha. Nejeyu Supuja Phalamu Bhojanamaku Mavu Raghunatha. What I offer to you as Bhojanam is my previous good karmas. I offer as Bhojanam to you, Raghunatha. Ninu Ju today Ghana Deepa Radhanamulu Raghunatha. When I look at you, that is the Ghana Deepa Radhanam, my dear Raghunatha. This is my puja vidhi. This is my humble offering from the Tyagaraja to Raghunatha, is what he says. Paripalaya, Paripalaya, Paripalaya Raghunatha. 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 Sthirachittamu varachami karapithamu Raghunatha. Sthirachittamu varachami karapithamu Raghunatha. Supada Dhyanamu Ganga Jalamaura Raghunatha. Supada Dhyanamu Ganga Jalamura Raghunatha. Ghana Kirtini Bhalaka Vasana Gandhamuro Raghunatha. Ghana Kirtini Bhalaka Vasana Gandhamu Raghunatha. Toli Dushkrita Phalamella Gugula Dhupamu Raghunatha. Toli Dushkrita Phalamella Gugula Dhupamu Raghunatha.
నీ పాద భక్తే బ్రోదదు దీపంబగు రఘునాథ నీ పాదము భక్తే బ్రోదు దీపంబగు రఘునాథ నే జేయుసు పూజా బలము భోజనమగు రఘునాథ నే జేయుసు పూజా బలము భోజనమగు రఘునాథ నేను జూచుటే ఘన దీపారదానముల గరునాథ నిను జూచుటే ఘన దీపారాధనముల రఘునాథ పూజ విధినయ్య త్యాగరాజకృతము రఘునాథ పూజ విధినయ్య త్యాగరాజకృతము రఘునాథ పరిపాలయ 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 రఘునాథ పరిపాలయ రఘునాథ పరిపాలయ రఘునాథ. Extremely thankful to all the gurus for giving us this opportunity to sing in front of Ramdas Papa. Thank you, thank you, thank you. Hari Om. जरा ऊपर चाहिए ना, नहीं थोड़ा ऊपर नहीं. हरि ओम आता है.
जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम
Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri 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 Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Jai Ram, Ram, Jai 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 Ram. Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai 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 Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai 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 Ram. Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ram, Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Om Shri Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय राम
Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram remove this. अच्छा अच्छा है ना ओके आवाज अच्छा है जाइए Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. O beginningless and endless Param Puja Papa, O beginningless and endless Param Puja Papa, you are all pervading. you are all pervading. You have manifested You have manifested as the entire universe as the entire universe, and you reside in everything. and you reside in everything. We pray for your blessings, We pray for your blessings, for the eradication for the eradication of all conflicts and fights of all conflicts and fights in all parts of the world, in all parts of the world, and for the bestowal and for the bestowal of peace and happiness of peace and happiness on one and all, on one and all, within and without. within and without. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
आदि अंतरहित परम पूज्य पप्पा അങ്ങ് സർവവ്യാപിയായി വിശ്വമായി പ്രകടിച്ച് എല്ലാത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള കലഹങ്ങളെയും ലഹളകളെയും ഇല്ലാതാക്കി എല്ലാവർക്കും അകത്തും പുറത്തും ശാന്തിയും സുഖവും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓം ശ്രീരാം ജയ രാം ജയ ജയ രാം. ഓം ശ്രീരാം ജയ രാം ജയ ജയ രാം. Arati number 7, Jai Jai Arati. Arati to you, O Ram, Raghunath, Murari, the Lord of Life, Sukha, Narada and other sages sing poems in your praise. Bharata and Shatrughna are fanning you with charmer. Sita, beside your lotus feet, is singing sonorous hymns along with her companions. Brother Lakshmana is holding the canopy. Mother Kausalya is performing Arati. Brave Hanuman is standing in your service. Kabir sings your praise in ecstasy. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ram
सुखनारद मुनि मंगल गावे सुखनारद मुनि मंगल गावे भरत शत्रुघ्न समल दुलावे भरत शत्रुघ्न समल दुलावे जय जय आरती राम तुम्हारे जय जय आरती राम तुम्हारे चरण कमल पर रहे सीता चरण कमल पर रहे सीता मंगल गावे सही समेता मंगल गावे सही समेता जय जय आरती राम तुम्हारे जय जय आरती राम शस्त्रधरी कर लक्ष्मण भ्राता शस्त्रधरी कर लक्ष्मण भ्राता आरती कर करे कौसल्या माता आरती करत है कौसल्या माता शमुग चरण रहे अनुवीरा शमुग चरण रहे अनुवीरा हर के गुण गावे कबीरा हर के गुण गावे कबीरा जय जय आरती राम तुम्हारे जय जय आरती राम तुम्हारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे जय जय आरती राम तुम्हारे जय जय आरती राम तुम्हारे धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायासी माता श्री गुरु रायासी जालिपर सुरवर विमान तरायासी धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायासी माता श्री गुरु रायासी जालिपर सुरवर विमान तरायासी पदोपदी अपार जाल्या पुण्याचारासी सर्वहिते ते कडली आमादि करोणी काशी धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायासी माझा श्री गुरु रायासी जलिपर सुरवर विमान रायासी मृदंग ताल गोल भक्त भाटे काती नाम संगीत रे नित्यानंद नास्ति धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायासी माझा श्री गुरु रायासी जलिपर सुरवर विमान कोटि ब्रह्मा हत्या हरति करिता दंडवत लोटांगन कालिका मोक्ष लोले पायांत धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायासी माझा श्री गुरु रायासी जलिपर सुरवर विमान रायासी गुरुभजनाच्या महिमान करे आगमन गमासी अनुपवी जे जानती जे गुरुपदी जय रहिवा धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायासी माझा श्री गुरु रायासी जलिपर सुरवर विमान रायासी प्रदक्षिणा करोनि देह भावे वाहिल श्रीरंगात्मज विठ्ठल फुले उभाराहिल धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा
श्रीनाथ सद्गुरुरायासी माझा श्री गुरुरायासी जलितपर सुरवर विमानतरायासी हालिन कांगन वंदीन चरण दुर्यानि पागिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे वालिन मने मनामा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 बुद्ध 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 हरे 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 पप्पा 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 हरे 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 माता 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 हरे 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 स्वामी 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 हरे हरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उभेषु न गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे श्रीनाथा उपासनेला दृढ व्हावे भूदेव संतांसी सदा लवावे सद्कर्मयोगे वयघालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे समर्थांसी सेवका वक्रपाहे असा सर्वभूमंडली कोण आहे जयाची लीलावणी त्रिलोकतिनी तुझेचे कला रामदासाभिमानी ज्या ज्या स्थली हे मन जाय माझे त्या त्या स्थली हे निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ध्यानिकानी तेथे तुझे सद्गुरु पायतोनी हरि ओम असतो पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम सब संतन पपाई की जय 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 गुरुदेव समर्थ ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम